Namaskar. Welcome to the fourth batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of Swayam Prabha live session for this batch. I am Dr. Gloria Kujur, faculty member of STRIDE IGNOU and one of the team member of NEP PDP program. Today we have with us Professor Santosh Panda, Senior Faculty of Distance Education and Director of STRIDE IGNOU. He is also the National Coordinator of NEP PDP program. Sir, we welcome you to today's session on the topic Multidisciplinary Institutions and Programs. Sir, may I now request you to deliver your presentation? So friends, दोस्तों आप सबकी स्वागत है। आप लोगों ने पहला मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखे होंगे अबाउट NEP, फिर आपकी जो मूल वीडियो है फॉर एडवर्टाइजिंग दिस प्रोग्राम वो भी आप देखे होंगे। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्तों लोगों ने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। हालांकि आपकी बैच नया है और आप हो सकता है कुछ पुराने बैच में से यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो यू आर ऑल वेलकम. I hope that you complete your certification this time, and those who are fresh, and I'm very sure you will join from today onwards the resources, the video, the print and the archive video discussion forum. Please do join in, and the discussion forum test and final test. 30% discussion forum, 70% final, and 50% score is the minimum which will lead to certification. I'm very sure you will all score that. But most important is इन चीज़ों को समझें कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. तो आप सब लोग NEP 2020 पढ़े होंगे, हम लोगों का ये जो यूनिट्स हैं वीडियो भी देखे होंगे, सारे देखे होंगे, नहीं तो यूनिट्स और वीडियोस को आप डाउनलोड करके रखिएगा, कभी मौका मिले उसको देखिएगा, और कॉन्फ्रेंसिंग में हर दिन 3 से 4 अटेंड कीजिएगा और डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट कीजिएगा. और लास्ट डे आपका ये टेस्ट खुलेगा. तो टेस्ट में आप सब लोगों को पता है दैट देयर इज़ अनलिमिटेड अटैम्प्ट, बट एक बार खोलेगा तो कम टाइम के लिए खोलेगा, तो आप कितनी बारी भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो 3 दिन ख़त्म होने के बाद मौका मिलेगा आप लोगों को. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक टुडे. आप लोग को जानकारी होगा, नहीं तो आप UGC वेबसाइट जाइए. UGC वेबसाइट में डॉक्यूमेंट को जिसके बारे में मैं आज जिक्र करूँगा, चर्चा करूँगा, तो उसको आप डाउनलोड कीजिएगा. और डॉक्यूमेंट अलग बात है, और डॉक्यूमेंट की जो कमेटी बनी थी मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, उसकी गाइडलाइंस हाउ टू ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, वो जो UGC का कमेटी था, इत्तेफाक से आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ द कमेटी, एंड वो डॉक्यूमेंट में भी एक्नॉलेजमेंट है, UGC का डॉक्यूमेंट है, उसकी जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा. सो आपके सामने जो है तो नेशनल पॉलिसी के बड़े मुद्दे हैं. नेशनल पॉलिसी के मुद्दे एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूसिविटी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़, इंडिजिनस, कॉन्टेक्चुअल टीचिंग लर्निंग होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, और जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं वो किसी ना किसी तरह एप्लीकेशन में आना चाहिए. थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप, ये फॉर्मुलेशन है. जो भी थ्योरी है, कोई भी कोर्स हो, थ्योरी और उसकी प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़, चाहे वो लेबोरेटरी हो, आउटसाइड लेबोरेटरी हो, किसी भी तरह एक्टिविटीज़ हो, होम टास्क हो, होम असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, पोर्टफोलियो हो, किसी भी तरह हो सकता है. मुद्दा मल्टीडिसिप्लिनरी का है, उसकी चर्चा करेंगे इसमें थोड़ी बहुत, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे. आउटकम बेस्ड लर्निंग, तो उसके बारे में भी चर्चा है. मल्टीपल एंट्री एग्जिट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बात करेंगे. एक्रेडिटेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ब्लेंडेड लर्निंग, ये सब मुद्दा है. आज जो हम चर्चा करेंगे तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरिटी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तो आएगा ही, लेकिन मुख्य मुद्दा जो होगा वो होगा कि संस्था जो है, मल्टी इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस
मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हो और प्रोग्राम्स मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हो। जा नहीं रहा है। सो आपके सामने यूजीसी गाइडलाइंस आप देख पा रहे हो। यूजीसी गाइडलाइंस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ये उसकी टाइटल है जो डॉक्यूमेंट है। 2022 में, अभी सितंबर 2022 में ये निकला। उन लोगों का मानना है, इनफैक्ट फॉरवर्ड में उन्होंने कहा है, यूजीसी चेयरपर्सन ने कहा है, चेयरमैन ने कहा है कि सब स्कॉलर्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स, दे विल बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी के तरफ जाएंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी के तरफ जाएंगे, संस्था भी, प्रोग्राम भी, उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी आप लोगों को आगाह कर दूं कि मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था तो बनेगा, लेकिन प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी बनने के लिए संस्था को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी से फ़ायदा क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी से कई फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो नया फॉर्मुलेशंस हैं, वो नया फॉर्मुलेशंस में से अपना डिसिप्लिन कोर जो है वो सिर्फ 50% का है, और जो 50% लगभग क्रेडिट्स आवर्स हैं उसको आपको कई अदर डिसिप्लिन्स, कई अदर कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, वैल्यूज़, इंटर्नशिप, तमाम रिसर्च, ये तमाम चीज़ों में, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, इन तमाम चीज़ों में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग है क्या इस वक्त कि या संस्था सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टीचर एजुकेशन में है। मैं एनसीटी का चेयरपर्सन रहा, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा संस्था, NEP भी उसकी जिक्र किया है कि 10,000 से ज़्यादा संस्था जो है वो संस्था सिंगल इंस्टीट्यूशंस है, ओनली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एक BEd है या DLEd है, इस तरह का है, या फिजिकल एजुकेशन का है, संस्था है। और ऐसे भी सिंगल डिसिप्लिनरी संस्था बहुत हैं, सिंगल डिसिप्लिन विश्वविद्यालय भी हैं। तो उनको कैसे से आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हो, लेकिन उसकी जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री है वो काफ़ी रिजिड है, अपने डिसिप्लिन में सीमित है, तो डिसिप्लिन से बाहर आना उनको चाहिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी होने से अपनी समझ, अपनी वर्ल्ड व्यू और अपनी एटीट्यूड और अपनी दक्षता, स्किल, हर चीज़ बढ़ता है। मेरे को एक डिसिप्लिन में बांध देंगे, मैं अगर दूसरे डिसिप्लिन में भी कोर्सेस ले सकता हूँ, क्या पता उसी डिसिप्लिन में मेरे आगे कुछ करियर आगे बढ़ें, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप डुअल डिग्री की भी बात करेंगे कि एक डिसिप्लिन में डिग्री लेते हुए आप डुअल डिग्री भी ले सकते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस या मल्टी डिपार्टमेंट हो जैसे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, या मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम्स हों। सो जो सिंगल मोड इंस्टीट्यूशंस जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। ये नेशनल पॉलिसी के तहत अगर हम चलेंगे सबको बनना पड़ेगा। बट मुद्दा सिर्फ वहाँ सीमित नहीं है। अगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं और अपनी डिसिप्लिन में बन जाते हैं, दूसरे डिसिप्लिन के साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं, डायलॉग नहीं रखते हैं, डिस्कोर्स नहीं रखते हैं, और उनकी कोर्सेज को आपस में लेन देन नहीं करते हैं, हालांकि स्टूडेंट का चॉइस रहेगा वो क्या कोर्सेज लेंगे, आगे आगे कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टूडेंट कई संस्थाओं से भी कोर्स ले सकता है। हालांकि वो संस्था अगर उसी शहर में है तो ले सकता है, अगर वो संस्था उस शहर में नहीं है तो वो डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग से भी, ब्लेंडेड लर्निंग से भी उसको कर सकता है। Therefore, the NEP recommends that stand-alone institutions should be removed and domain-specific higher education institutions should be converted into multidisciplinary institutions. NEP 2020 कहता है, जो आप वाकिफ़ हैं, कि 3 तरह का संस्था आगे रहेगा। एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट जो ज़्यादातर रिसर्च करेंगे लेकिन थोड़े बहुत पढ़ाएंगे भी। मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादातर पढ़ाएंगे लेकिन रिसर्च भी करेंगे, और जो रिसर्च होगा वो स्टूडेंट डिसर्टेशन, स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होगा।
और मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेजेस 3 तरह की होंगे, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस, बट सारे मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं या वो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएंगे या क्लस्टर कॉलेज में शामिल होंगे। एक शहर में 5 तरह की कॉलेजेस हैं, 5 मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, तो लेकिन अगर आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग हो और MOU हो और स्टूडेंट जो कोर्स करेगा जहाँ से वहाँ का फीस देगा, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और टाइम टेबल इस तरह बने, अगर बने तो उसको हम क्लस्टर संस्था कहेंगे, एक क्लस्टर कॉलेजेस कहेंगे, या कॉलेजेस डिसाइड करेंगे कि साहब हम यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे अगर यूनिवर्सिटी उसमें राजी होता है तो। कॉमन डिपार्टमेंट्स रहना जरूरी है, मानना ये है। कॉमन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होंगे जो हर कोई डिसिप्लिन का उससे कोर्सेस लेना पसंद करेगा। लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसॉफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, म्यूजिक, एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ने कहा है कि एजुकेशन, हर कॉलेज में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिसाइड्स इट्स ओन डिसिप्लिन काम ये रहेगा दैट इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मल्टी डिसिप्लिनरिटी। कैसे, उसकी बात करेंगे। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसलेशन, ये सब रहेंगे। अप्रोच इसका क्या रहेगा? आप सोचिएगा कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस हैं, मल्टी डिपार्टमेंट कॉलेजेस हैं, वो तो ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी हैं ही, तो लेकिन उनको दूसरी डिसिप्लिन से ऐसे प्रस्तावना है कि दूसरी डिसिप्लिन से, मैं एक कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसमें जाहिर है कि हम अगर उसको फॉलो करते हैं, जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, तो अगर उसको करते हैं हमको दूसरी डिसिप्लिन से कोर्स लेना जरूरी है। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप दूसरी डिसिप्लिन में से स्किल बेस्ड कोर्सेज ले सकते थे, प्रावधान था, उसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। सो एकेडमिक कोलैबोरेशन थ्रू हायर एजुकेशन क्लस्टर, जो क्लस्टर बनेगा आपस में कम दूरी में जो हैं तो आपस में समझौता करके क्लस्टर बने, या उस तरह का हो, या सिंगल इंस्टीट्यूशंस, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो मर्ज हो जाएं एज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, मर्जर की भी थोड़ी बात करेंगे, और एडिंग डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन। ये 3 मुद्दा उसमें सख्त है और इन 3 मुद्दे के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, इन दिस केस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक संस्था जब मल्टी डिसिप्लिनरी ऑलरेडी है, उसके डिपार्टमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी बनता है। हम तो इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से बाहर नहीं आते, बहुत कम आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत और इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत आते हैं। तो अगर दूसरी डिसिप्लिन से हमको कोर्सेस लेना पड़ेगा तो ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके मैं चर्चा करूंगा। सो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें ओरिएंट स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया, तो उन्होंने एक नेशनल ग्रिड एक बनाया, एक सर्वर बनाया जहां एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स का अकाउंट रहेगा, स्टूडेंट अपने नाम पर अकाउंट खोल सकता है, और जहाँ जहाँ से कोर्सेज क्रेडिट करेगा वो कोर्स क्रेडिट्स उस खाते में जाएगा, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, जिसका काम है वेरीफाई करेगा, क्रेडिट एक्युमुलेशन करेगा और क्रेडिट ट्रांसफ़र करेगा, या मेरे को क्रेडिट कहीं से मिला है मैं क्रेडिट रिडेम्प्ट करूं, मतलब मैं भुगतान करूं, उसको लगाऊं। तो क्रेडिट लगा के अगर मैं एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले लिया, मेरी वो क्रेडिट वहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं उसको भुगतान कर लिया, आई हैव स्पेंट दैट। सो जनरल कंडीशन क्या होगा कि जो रेगुलेटर्स होंगे उनके रेगुलेशन से एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ रेगुलेटर का रेगुलेशंस जो है वो किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी लाएगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड तय होगा कि भाई किस किस डिसिप्लिन से हम लोग कोर्सेज ले सकते हैं जो रेगुलेटर की मान्यता में आए। आपके सामने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है जो इस वक्त चर्चा में है। तो
तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, तो एक जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसका मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट, तो उसकी बराबरी, उसकी क्या लर्निंग आउटकम में हम लोगों को ज़रूरत है, जिसको हम 4 साल के बाद के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मानेंगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, हर सेमेस्टर में, हर कोर्स में, हर साल किस तरह का उसमें क्रेडिट और क्रेडिट का स्टैंडर्ड और उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी किस तरह रहेंगे, उसकी एक्टिविटी किस तरह का होगा, उसमें असेसमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह का होगा, ये तमाम चीज़ें क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो एक आपका क्वालिफिकेशन को, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन को डिफाइन करता है। सो देयरफॉर द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो है वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है, आपको जानकारी होगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क ये कहता है कि साहब डिफरेंट लेवल पर स्कूल से लेकर रिसर्च तक, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च, डिफरेंट लेवल्स में स्किल की स्टैंडर्ड क्या होगा और स्टैंडर्ड जो होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। सो स्टैंडर्ड एज वेल एज क्वालिटी, उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी पढ़ेंगे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क गूगल करिए, वो आपको मिलेगा, तो उसमें से जानकारी लीजिएगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क की बराबरी में नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बना गया। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मान लीजिए, तो उसमें जो स्किल की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हायर एजुकेशन की स्किल के मामले में बराबरी में है, और दूसरे आउटकम बेस्ड लर्निंग है। आउटकम बेस्ड लर्निंग आप वाकिफ़ हैं दैट स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के बाद या कोई भी सेमेस्टर के बाद वो क्या अचीव कर पाएगा, क्या कर पाएगा या कर पाएगी, समझ पाएगा तो ठीक है, लेकिन कर क्या पाएगा, उसको अप्लाई क्या कर पाएगा, दैट इज आउटकम बेस्ड लर्निंग। आपके सामने 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेवल का है, 5 से 10 लेवल का, 5 से 8 लेवल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 9 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 10 रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। मैं साथ साथ आपको पावर पॉइंट नज़र में आता होगा, मैं साथ साथ लिखा हूँ लेवल 5 जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, वो आजकल बदल रहा है, उसको 4.5 कहेंगे, लेवल 6 को 5 कहेंगे और लेवल 10 को 8 कहेंगे। तो 4.5 से शुरू होकर 8 तक चलेगा। ये जो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क का जो आंकड़ा है, जो लेवल है, वो थोड़ी सी बदल रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है जो आपके सामने है, मतलब ये है अब 40 क्रेडिट का, क्योंकि 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 160 क्रेडिट का होगा। एक सर्टिफिकेट आप फर्स्ट ईयर करेंगे 40 क्रेडिट में और आपको सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, किसी काम में लग जाइए, देन यू कैन कम बैक, द स्टूडेंट कैन कम बैक, और फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा और 40 का कर लेगा, फिर वापस चला जाएगा काम में, फिर आएगा थर्ड ईयर कर लेगा तो उसको बैचलर्स डिग्री मिलेगा, और फोर्थ ईयर करेगा बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। सो इट विल बी रिसर्च, बेसिकली रिसर्च डिग्री 4 साल करने के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकता है। सोशल एंड लाइफ स्किल्स और रिसर्च स्किल्स और इंटर्नशिप, ये 3 चीज़ें काफ़ी क्रेडिट आवर्स को बढ़ा देते हैं, जिसके लिए 3 साल का प्रोग्राम लगभग 4 साल का हो जाता है। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आ गया तो इसमें क्या आया कि एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, दूसरा ये होगा कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जो आपके सामने पावर पॉइंट में है, दिस इज द फ्रेमवर्क। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इसमें हो पाएगा, और जब 1 साल करने के बाद जाए 40 क्रेडिट, उसको थोड़े बहुत एक इंटर्नशिप और क्रेडिट्स करने पड़ेंगे, जॉब स्पेसिफिक इंटर्नशिप उसको करने पड़ेंगे जिस जॉब में उसको जाना होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा दोहरा दूं। इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये आपकी फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा। आगे जो आप करिकुलम बनाएंगे इस तरह रहेगा। मैं 160 क्रेडिट का और 176 क्रेडिट दिल्ली विश्वविद्यालय का आपके सामने रखूंगा और थोड़ी कंपैरिजन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्टीम इंस्टेड ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके साथ आर्ट एजुकेशन जोड़ गया है। आपको जानकारी होगा कि ये जो नेशनल पॉलिसी 2 बातें बड़ी सख्ती से कह रहा है, बहुत ज़रूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिबरल आर्ट्स का एजुकेशन एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है कोर्सेज की, वो सबके लिए कंपलसरी होगा।
दूसरी बात ये होगा कि साहब वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, कोई भी जॉब रिलेटेड एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी, कुछ भी नाम दीजिए, ये अक्रॉस द बोर्ड हर एक के लिए कंपलसरी होगा। इसलिए आपकी करिकुलम जो है थ्योरी, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप 3 बटा में बढ़ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेड ऑफ स्टेम इट विल बी स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज। आपके स्किल कोर्सेज इंडस्ट्री वाले बनाएंगे, वो हम लोगों का कमी है, आज तक हम इंडस्ट्री वालों को शामिल नहीं करते। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस का कुछ कोर्सेज रहेंगे, वो रिसर्च और इंटर्नशिप का रहेंगे, और इंटर्नशिप जो होगा वो स्किल बेस्ड का, डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, और रिसर्च के बारे में भी होगा। 2 तरह के इंटर्नशिप इसमें रहेंगे। एनवायरमेंट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट कंपलसरी होगा। स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी किसी न किसी रूप में उसमें बांधना पड़ेगा, चाहे स्किल कोर्सेस हो या स्किलिंग थ्रू एक्टिविटीज़, पोर्टफोलियोज आप बिल्ट इन करें, और मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन होगा। इस तरह का कोर्सेस होंगे जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, एथिकल, हर तरफ से स्पिरिचुअल, हर तरफ से उसको डेवलप कर सकता है। आपके सामने 2 तरह का आंकड़े हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक यूजीसी का जो चर्चित में है, इस वक्त चर्चा में है, 160 क्रेडिट्स, और दिल्ली विश्वविद्यालय जिसको लागू कर दिया 172 क्रेडिट्स। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी सेमेस्टर से ये लागू है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ, वो टेस्ट में जो फारिग हुए हैं, अभी एडमिशन्स ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्सेस लागू हो गया। कैसे रहेगा आपके सामने है। डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी 48 का क्रेडिट का रहेगा कोर, और उसकी इलेक्टिव 32 क्रेडिट्स के रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 क्रेडिट 50% इज योर डिसिप्लिन, आइदर कोर और इलेक्टिव। सो 50% आउट ऑफ 160 क्रेडिट्स इज योर डिसिप्लिन। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज 16 क्रेडिट, वैल्यू के ऊपर 12 क्रेडिट, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट 12 क्रेडिट, रिसर्च एंड एडवांस डिसिप्लिन कोर्सेज 40 क्रेडिट्स, 160 क्रेडिट्स। उसको कंपेयर करिए नीचे टेबल में दिल्ली विश्वविद्यालय का। लगभग आपकी कैटेगराइजेशन ऑफ कोर्सेज रिमेन द सेम, बट क्रेडिट आवर्स में फ़र्क है। उन्होंने डिसिप्लिन कोर को 86 क्रेडिट दे दिया, और डिसिप्लिन जनरल इलेक्टिव जो मल्टी डिसिप्लिनरी उसको 56 दिया। There in UGC the discipline, interdisciplinary, core and elective वो भी 80 क्रेडिट का है, और ये discipline core itself is 80 क्रेडिट्स। Ability enhancement, skill enhancement और internship कम है, और आपकी multidisciplinarity, interdisciplinarity, skill based courses ज़्यादा है, 172 क्रेडिट का है। 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है, जो आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में इसको बिल्ट इन करेंगे, उसकी ज़्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स का, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, उसका सोशल लाइफ वैल्यू बढ़ेगा, उसकी पर्सनल लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, समाज का लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, ग्लोबल सिटीजनशिप का भी बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स, critical thinking, problem solving, creativity, responsibility, ethical skills, leadership, digital skills, managerial skills, हैप्पीनेस स्किल्स एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अपने आप को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए अपनी लर्निंग को जो कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग उसको कहा जाता है। और मेटाकॉग्निशन जो एकदम हाई ऑर्डर लेवल ऑफ लर्निंग, जो इस्तेमाल करे अपने इंटेलेक्ट को और आगे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप 21st सेंचुरी स्किल्स के ओरिएंटेड के हिसाब से कोर्सेस भी बनाएं, स्किल बेस्ड कोर्सेस, या आपकी एग्जिस्टिंग कोर्सेस में आप उसको शामिल करें ये सब स्किल्स। आइदर वे इट इज पॉसिबल, सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मल्टीडिसिप्लिनरिटी, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑल्सो। मल्टीडिसिप्लिनरिटी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, ये जो हैं ये लगभग आपस में मल्टीडिसिप्लिनरिटी लाते हैं। मैं एजुकेशन का एग्जांपल दूंगा बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द कमिटी which wrote this document on education, how to become multidisciplinary, to collaborate to offer multidisciplinary programs. So education, management, law, engineering ये काफ़ी शामिल होंगे। डुअल डिग्री हो सकता है, डुअल डिग्री हाल ही में डुअल डिग्री, जॉइंट डिग्री और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द नेम ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, यूजीसी डॉक्यूमेंट लाया है। और आज की न्यूज़ बताता है कि yesterday UGC has decided that they will allow
n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज कुछ गुजरात में हुआ था, प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन कर रहे थे तो उसमें चर्चा में आया, रेगुलेशन बन गया और वी आर वेटिंग कि आज वो रेगुलेशन या कल अगर वो शामिल हो तो रेगुलेशन कहता है कि इमीडिएटली इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड टू एस्टैब्लिश दिस कैंपस इन दिस कंट्री। पहले हम सोच नहीं पाते थे, आर्गू करते थे, झगड़ते थे, प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढते थे। तो इसी वक्त ये है बिकॉज वी आर सिग्नेटरी टू WTO गैट्स, उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। एजुकेशन उन लोगों का मानना है ट्रेडेबल कमोडिटी है, बट फॉर्चुनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक गुड एंड पब्लिक सर्विस विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम दोनों चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल BA B.Ed आप ले सकते हैं, 5 साल का प्रोग्राम 4 साल में, डुअल डिग्री प्रोग्राम है। डुअल डिग्री प्रोग्राम UGC का रेगुलेशन 2022 का आ गया। हालांकि डुअल डिग्री में हम लोगों का मानना है, जैसे मैंने लिखा हूँ या आगे मैं बताऊंगा, 4 ईयर डुअल मेजर बैचलर्स डिग्री भी आ गया। लेकिन आप एक डिग्री एक संस्था से ले सकते हैं, दूसरे संस्था अगर आसपास आपका क्लस्टर कॉलेज है, सेम शहर में है, तो आप वहाँ अरेंजमेंट करके ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से लेना पड़ेगा और आपकी दोनों संस्था की MOU पार्टनरशिप होना जरूरी है। एग्जाम्पल IGNOU का मैं आपके सामने देता हूँ। IGNOU कहता है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, दैट हम लोगों का डुअल डिग्री प्रोग्राम इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, दैट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप 2 प्रोग्राम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हालांकि आप एक IGNOU एक दूसरी संस्था से ले सकते हैं, दोनों भी आप IGNOU से ले सकते हैं। एडमिशन इन 2 एकेडमिक साइकिल्स, 45 प्रोग्राम्स इसमें शामिल है IGNOU की किटी में। IGNOU 45 प्रोग्राम को डुअल डिग्री दे रहा है। तो लेकिन अगर आप IGNOU का दोनों डिग्री करना चाहते हैं तो एक डिग्री और दूसरी डिग्री के बीच में 1 सेमेस्टर का फासला होना चाहिए, नहीं तो दोनों की क्लास हो जाएगा टाइम टेबल और तमाम चीज़ों में। नो साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडी, अगर आप मेडिकल में एक डिग्री कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग में एक डिग्री करूं, उसमें रेगुलेटर बीच में आ जाते हैं। रेगुलेटर्स हैव टू डिसाइड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रोग्राम व्हिच आर नॉन प्रोफेशनल, नॉन रेगुलेटर। हालांकि UGC इज ए रेगुलेटर बट नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, उसकी बात करता हूँ। क्लस्टर कॉलेज की बात किया गया है। थोड़ा सा सोचिएगा कि आप एक शहर में अगर 5 कॉलेजेस हैं जो एक ही विश्वविद्यालय का है, वो आपस में जोड़ जाएं। हालांकि दे आर एफिलिएटेड कॉलेजेस, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, आपस में जोड़ जाए। 5 प्राइवेट कॉलेज हैं जो 5 प्राइवेट मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपस में अगर वो आपस में बातचीत करते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टूडेंट्स को फ़ायदा दिलाने के लिए कोशिश करें, एक कॉलेज का स्टूडेंट दूसरी कॉलेज का कोर्स कर सकता है। टाइम टेबल में अगर सही हो पाया कि जिस वक्त ये कोर्स चल रहा है उसी वक्त वो कोर्स ना चले तो इवनिंग कॉलेज चले, कुछ इस तरह। तो एक स्टूडेंट एक संस्था से ज़्यादा, एक संस्था के ऊपर ज़्यादा संस्था से कोर्सेस ले सकता है टुवर्ड्स द सेम डिग्री, और सेम स्टूडेंट साइमल्टेनियसली 2 संस्था से 2 डिग्री कर सकता है। उसमें चर्चा ये भी हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो चेयर गवर्नमेंट नॉमिनी हो, प्राइवेट में मैनेजमेंट नॉमिनी हो, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, एक वाइस चांसलर हो, 2 प्रिंसिपल्स हो, एकेडमिशियन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो। ये जो है एक एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तय करेंगे कि सब आपस में किस तरह का करेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर होगा और जो क्रेडिट मिलेगा बच्चे का, स्टूडेंट का, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका चला जाएगा। उसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ज़्यादा लेगा तो उसका मन करेगा मैं उसी संस्था से डिग्री लूँ। स्पेशली प्रैक्टिकली सोचें तो जहाँ अपने डिसिप्लिन कोर और डिसिप्लिन इलेक्टिव जहाँ संस्था से उसको सबसे ज़्यादा मिला वो वहाँ से डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी संस्था तो कहेगा मेरी पूरा नहीं हो रहा है, मैं डिग्री नहीं दे सकता। बट वन ऑफ द डिसिप्लिन और वन ऑफ द इलेक्टिव skill based courses can be taken from another. Community development, environment, skill based courses, internship and quite a few others can be taken from others. Merger की बात हो रही है, that same management institute can be merged as per rules of the state government. तो वो कहेंगे कि साहब हम 2 मैनेजमेंट की संस्थाएं मर्ज करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, मर्ज हो सकते हैं। मर्जर इज नॉट अ न्यू थिंग। अगर वो कहेंगे कि साहब हम सेम मैनेजमेंट का है, हम तो मर्ज कर ही सकते हैं। दूसरे मैनेजमेंट तभी भी कर सकते हैं, इट इज अप टू देम, बट मर्जर फैसिलिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट कैन ऑल्सो मर्ज। Now let us get into
ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है अगला 5-7 मिनट में आपके सामने रखूंगा। NEP ने कहा है कि दैट एवरी कॉलेज और एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। कारण डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरिटी को मदद करता है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टीचिंग, लर्निंग, पेडागॉजी, करिकुलम, असेसमेंट, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ये तमाम चीज़ों में डिपार्टमेंट एजुकेशन मदद कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम है करिकुलम और पेडागॉजी के ऊपर रिसर्च करना। किस रूप में रखा गया है, और आप रिपोर्ट देखिएगा जो UGC का आया है जिसमें मैं कमेटी मेंबर रहा हूँ, उस रिपोर्ट को देखिए कि ये किस रूप से ये आगे रहेगा। NEP 2020 कहता है वन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो क्या करेगा? मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा। सेक्शन 15 ऑफ द नेशनल पॉलिसी सेज कटिंग एज रिसर्च इन एजुकेशन उनको करना है जो सभी डिपार्टमेंट को फायदा होगा। आपको याद होगा जो टीचिंग लर्निंग सेंटर अंडर TLCs अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग, खास करके उसका काम है रिसर्च इन डिसिप्लिन पेडागॉजी एंड इम्प्रूविंग डिसिप्लिन पेडागॉजी। सो डिसिप्लिन का पेडागॉजी, कोई भी डिसिप्लिन हो, हर एक का अपना अपना पेडागॉजी है, उसको बनाना और उसके ऊपर रिसर्च करना। लगभग उसी तरह कंट्रीब्यूशन कटिंग एज रिसर्च इन एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन टू करिकुलम डिजाइन, पेडागॉजी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ऑल टीचर एजुकेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। ये भी NCT का मुद्दा है, जो मैं भी चेयरपर्सन रहा। 2014 के रेगुलेशन में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पहली बार बनी देश में। तो 5-year प्रोग्राम कैन बी डन इन 4 years, बट इट विल बी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। दिस विल डुअल डिग्री, BA, B.Ed or BSc, B.Ed. There will be 2 degrees. BSc will be taught by BSc departments and education will be taught by education departments. उसमें होगा क्या? द सारे टीचर एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में आएंगे। मोर देन 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो स्टैंड अलोन है, दे हैव टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, अदरवाइज दे विल बी क्लोज डाउन। दैट्स व्हाट द NEP 2020 सेज। सो मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स ये लोग कर सकते हैं। 15.6 कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ रेंज ऑफ एक्सपर्ट्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में करिकुलम, पॉलिसी, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्पेशल नीड्स एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो सभी को फायदा होगा। ये सिर्फ एजुकेशन डिसिप्लिन को थोड़ी फायदा होगा, एजुकेशन डिसिप्लिन में सीमित नहीं है, एजुकेशन को तो फायदा होगा ही। लेकिन ऑल ऑफ दीज विल बी द कंट्रीब्यूशन बाय एजुकेशन फैकल्टी। आपको याद होगा जब ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम चलते थे UGC के, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बिकॉज दे स्पेशलाइज इन पेडागॉजी। रिफ्रेशर इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में होता था। 15.9 कह रहा है ऑल PhD scholars they have to take a few credit courses in education itself. So education से चाहे वो फिजिक्स में करता हो, मेडिसिन में करता हो, किसी में करता हो, उसको एजुकेशन से कुछ क्रेडिट का कोर्सेज करना पड़ेगा। कोर्सेज विल बी रिलेटिंग टू करिकुलम, पेडागॉजी, कम्युनिकेशन, राइटिंग एट्सेट्रा। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इस वक्त है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन है, या कहीं कहीं एज ए डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी। जैसे मैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा हूँ, आई एम नॉट B.Ed and M.Ed, so I am not a professionally competent teacher educator, but I belong to discipline of education which talks about organization, management of education policy of the country, 5-year plans those days and these days, Niti Aayog policy and planning. These are all part of the education discourse. So education as a discipline, teacher education, in service, pre-service, education department, undergraduate college में इस वक्त है एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन या इंटरडिसिप्लिनरी और टीचिंग प्रैक्टिस इसमें शामिल है। BA एजुकेशन बहुत सारे स्टेट्स में है, आप वाकिफ होंगे। BA एजुकेशन में एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन पढ़ाते हैं, उसमें कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं जैसे लैंग्वेज एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग आप कहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का, एंड टीचिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। पेडागॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग करेंगे, रिसर्च इन पेडागॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसर्च भी करेंगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल आइसोलेशन में इस वक्त वो हैं,
उनके इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए नेशनल पॉलिसी और ख़ास करके टीचर एजुकेशन का सेक्शन इसका जिक्र किया है, जिसके बेसिस पर ये यूजीसी का रिपोर्ट बना है. सो education departments in multidisciplinary institutions to offer integrated teacher education also. They have to deal with disciplines or departments like psychology, sociology, neuroscience, language, art, history, literature, science, mathematics. ये तो common है ही है. आप ये सारे डिपार्टमेंट्स एजुकेशन में बैठा नहीं सकते और सारे का स्पेशलिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते. Therefore, the earlier model of the one education department having even the science faculty, mathematics faculty, this is not going to work anymore. No, we can afford to do that. Therefore, the education has to link with psychology, sociology, neuroscience, language, art, history, literature, science, mathematics, drama, music, and so on and so forth. Structural arrangement कैसे रहेगा? That education departments to start with will be established in select universities and colleges, जिसको आप School of Education कहेंगे. आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जस्टिस वर्मा कमीशन की 2014 रेगुलेशन जब बन रहे थे टीचर एजुकेशन की अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वर्मा कमीशन, उस वक्त कहा गया दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन. उस मुद्दे को लेते हुए एनसीटी एंड यूजीसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ HRD those days, now Minister of Education, we took a decision that at least the new central universities, 11 central universities have been established with schools of education under Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teachers and Teaching, each one with 21 faculty and 10 crores of rupees. You look at those 11 new central universities, उसी पैटर्न में उसमें leadership, management, technology, special education, special needs education, then your teacher education, then your policy and planning, and all kinds of educational discourses that are multi-departments, 8 to 10 departments. Those will be called schools of education. So therefore, the new departments that will be established, especially in universities, they should be called the schools of education. Even in colleges, if the college allows to call so, name so, it could also be schools of education. उसका काम रहेगा implementation of NEP 2020 besides contributing to whatever I discussed. उसका और एक काम रहेगा कि यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से बनेंगे, उसकी रिसोर्स डेवलपमेंट काम रहेगा, ट्रेनिंग काम रहेगा, रिसर्च काम रहेगा, स्किल बेस्ड कोर्सेज बनाएगा, multidisciplinary to and fro, meaning thereby the national policy says that it should be to and fro, that education department has to itself become multidisciplinary by calling them as school of education with multi-education departments in there, including policy planning, organization, management, besides teacher education, or they could also contribute to multidisciplinarity of other departments. So to and fro, that simply means they will receive from others as multidisciplinary others courses, they will also contribute their courses, and हर research scholar को कुछ credits education से करना जरूरी है. Functions we will complete within a minute or two, friends. उसको strategic planning, organization management उसका काम रहेगा. Education planning in the country, for instance, तो इसको कौन करेगा? तो education planning, those who are dealing with education policy and planning, they will do it. They will basically come from education departments. But education department is not traditional sense as education restricted standalone departments. They have to be multidisciplinary departments. Then only they can contribute to education policy and planning better. That's what we have argued in the document, UGC document. There can be special interest groups in policy studies, educational studies, equity and inclusion. Equity and inclusion तो सभी डिसिप्लिन का है, तो हायर एजुकेशन का मुद्दा है, तो उसमें एजुकेशन तो कोई पर से कुछ नहीं है. लीडरशिप एंड गवर्नेंस सभी का मुद्दा है, स्पेशल नीड्स एजुकेशन सभी का मुद्दा है, इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी पेडागॉजी, करिकुलम, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सभी का है, टू ऑल डिसिप्लिन्स. PhD scholars 4 to 6 hours, if possible, they can teach a week. As research teaching assistants, they can take tutorials, lab work, evaluation, resource development of research and teaching, digital continuing professional development resources, best practices, scholarship of teaching and learning. That means pedagogy of the discipline and researching on the pedagogy of the discipline. ये उनका main उद्देश्य रहेगा. MOOCs, OER, machine learning, micro credentials, multidisciplinarity, research programs, and they could link to teaching learning centers and inter-university center for teacher education जो इस वक्त बनारस विश्वविद्यालय में है और एक दो और विश्वविद्यालय में है. So friends,
I'm coming to the conclusion that there will be linkage to higher education institutions. कॉग्नेट डिसिप्लिन के साथ भी उनके रिसर्च रहेगा, पेडागॉजी ऑफ द डिसिप्लिन पर काम करेंगे, कटिंग एज रिसर्च इन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके ऊपर कटिंग एज रिसर्च यही करेंगे, बट इन कोलैबोरेशन विथ colleagues from other disciplines should also join in. आप कहेंगे मैं दूसरे डिसिप्लिन से ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? इसी वक्त आपकी API और CES में रिसर्च इन योर और पेडागॉजी ऑफ योर डिसिप्लिन कोई हिसाब नहीं है, और रिसर्च इन योर पेडागॉजी एंड पब्लिकेशन इन द पेडागॉजी ऑफ योर डिसिप्लिन, रिसर्चिंग ऑन दैट, उसकी API नहीं मिलता आपकी API और CES सिस्टम में. कल को अगर ये बदल जाए तो यू वुड लाइक टू जॉइन इन रिसर्चिंग योर ओन पेडागॉजी एंड जॉइन विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, continuing professional development for national education 2020. So thank you friends for this very small and presentation. अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, मुख्य तौर पर इंस्टीट्यूशंस जो मल्टी डिसिप्लिनरी है वो अपने डिसिप्लिन को दूसरी डिसिप्लिन के साथ खोलना चाहिए, दूसरे संस्था के डिसिप्लिन के साथ खोलना चाहिए, उससे दूसरे डिसिप्लिन का कोर्सेस उनको लेना चाहिए, अपने डिसिप्लिन का कोर्सेस दूसरे को देना चाहिए. उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा, स्टूडेंट के ऊपर रहेगा वो कहाँ से कोर्स कर सकता है, और उसकी बैंक क्रेडिट जो होगा वो अपना एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट में दाखिल करेगा. जब ये चालू होगा तब इसकी क्या प्रॉब्लम होंगे, कैसे होंगे, वो तभी समझ में आएगा. अभी तक तो कोई प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा लगता नहीं है, जब ये काम में लगेगा तब पता चलेगा कि किस तरह का. लेकिन स्टूडेंट का फ़ायदा का है, स्टूडेंट का एम्प्लॉयबिलिटी का है, स्टूडेंट का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का मुद्दा है, और स्टूडेंट का एक गुड सिटीजन बनने का मुद्दा है. ये तमाम चीज़ें और उसकी क्वालिटी सिटीजनशिप, क्वालिटी ह्यूमन बीइंग एंड क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म का मुद्दा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो ऑल्सो मैनी अदर डिपार्टमेंट्स towards multidisciplinarity as we discussed. If there are any questions. Thank you very much, sir, for a very informative and interesting session. I hope our viewers have greatly benefited from your lecture. We will be joining shortly for the question and answer session. So friends, if there are questions, you might have sent questions also. आप डिस्कशन फोरम में भी इसके मुद्दे उठाइए, हम लोग उसको जवाब देंगे. आज शुरुआत हुआ है, आप डिस्कशन फोरम में भी इसको रखिएगा. और इसी वक्त जो क्वेश्चन आए हैं, some of the main questions will pick up. Yes. Yes, we have received quite a few questions. Viewer is asking that you have already explained in your lecture that can commerce and science be studied in multidisciplinary approach? Yes. ये तो बहुत पुराना मुद्दा है. इग्नो में हम लोग इसको बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में इसको अलाउ किया था, और यूजीसी ने इसके ऊपर बहुत बार चर्चा किया है. लेकिन इस वक्त ऐसा है, जो साइंस पढ़ रहे हैं वो कॉमर्स ले सकते हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो साइंस ले सकते हैं. लेकिन कॉमर्स वाला उसी साइंस का कोर्सेस लेंगे जो उनको फ़ायदा में लगेगा, उनको एक एडिशनल या नॉलेज एनहांस करेगा या स्किल में काम में लगेगा. तो कुछ हद तक क्रेडिट आवर्स सीमित रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे कि कितने क्रेडिट वो दूसरी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं. अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आप एक म्यूजिक का कोर्स भी ले सकते हैं. आप कहेंगे म्यूजिक में मैं डिस्टेंस लर्निंग में म्यूजिक डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ सकते हैं. आपके सेम शहर में दूसरी कॉलेज में म्यूजिक है, अगर उसकी सिलेबस और उसकी टाइम टेबल आपके सूट करता है तो आप दूसरे से एक म्यूजिक का कोर्स लेंगे. दैट कोर्स क्रेडिट विल गेट इनटू एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, और आपका जो मेन संस्था है कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो म्यूजिक का क्रेडिट को आपकी क्रेडिट में शामिल करेगा. Simultaneously, you can also take up a course from SWAYAM up to 40% क्रेडिट तो आज की तारीख में अलाउड है. आप स्वयं 60% पढ़ाइए, स्टूडेंट 40% स्वयं से लेगा, लेकिन उसकी मर्जी से वो लेगा कौन सा कोर्सेस लेगा. लेकिन काफ़ी हद तक आप एज टीचर्स यू विल बी गाइडिंग योर स्टूडेंट्स कि कौन सा कोर्सेस दूसरे से लेने में आपको फ़ायदा होगा, जरूर ले सकता है. Another question is, if you are studying multidisciplinary subjects, then how can you distinguish between science students from art students? आप ऐसा है, आज की तारीख में 50% ऑफ द क्रेडिट्स इज योर डिसिप्लिन. पहली बात तो 50% तो आपके अपने डिसिप्लिन का हुआ. जो और 50% है
कम्युनिटी एंगेजमेंट आप करेंगे साइंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट इन आर्ट्स विल बी डिफरेंट. Community engagement will be this much of credits, but that will be more geared towards science. That community engagement will be geared more towards arts or sociology or psychology and so on and so forth. So distinction is not a problem. That if you have studied 50% discipline core, तो उसमें तो आप उसी डिसिप्लिन को बिलोंग किए ना. रेस्ट ऑफ द डिसिप्लिन तो क्रेडिट्स जो है आपके डिसिप्लिन को बिलोंग नहीं करता. तो आप जिस डिसिप्लिन में कम से कम 50% लिए हैं तो वो डिसिप्लिन में आप यू आर साइंस और यू आर कॉमर्स. बट टू एनहांस योर एबिलिटी एज गुड ह्यूमन बीइंग, as a larger human being with larger understanding, global understanding and employability skills, आपको दूसरे environment, community engagement, value, ये तो सब compulsory हर जगह है, सबको पढ़ना पड़ेगा. Art and culture सबको पढ़ना पड़ेगा. तो therefore आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपकी ability, आपकी कीमत, आपकी ज़्यादा बढ़ता है. So therefore आपकी स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ता है, आपकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ता है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है. So therefore 50% common minimum discipline core and elective guarantees you to belong to that discipline. और आप दूसरे 50% जो है वो तो और चीज़ों से लेंगे, डिसिप्लिन से नहीं. So obviously it is distinguished. There is no question of BA and BSc students distinction. It is distinguished clearly. No issue. Next question is, how is multidisciplinary approach useful in research field? देखिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हम आज तक इंटरडिसिप्लिनरी में पढ़ाए हुए हैं. किसी न किसी रूप में दूसरे डिसिप्लिन को हम अपनी एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ इन तमाम चीज़ों में हम लाते रहे हैं एज टीचर्स. थोड़े बहुत हम सभी किसी न किसी रूप में इंटरडिसिप्लिनरी करते रहे हैं. इंटरडिसिप्लिनरी होगा, थोड़ा दिलचस्पी बढ़ेगा, उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो ज़्यादा कैपेबल होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ज़्यादा चीज़ों को काम में लगा पाएगा. जो सीखेगा उसको काम में नहीं लगा पाएगा समाज में तो उसके सीखने का कोई वैल्यू तो नहीं है ना. तो इसलिए थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप की बात किया गया. सो फॉर रिसर्च इज कंसर्न, रिसर्च में आप तो इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं किसी न किसी रूप में. देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ जिसके ऊपर रिसर्च होता है, वो काफ़ी हद तक इंटरडिसिप्लिनरी है. लेकिन थोड़ी बहुत हमारा रिसर्च फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिव्यू, तमाम चीज़ों में हम थियोरेटिकल बैकअप कहीं ना कहीं हम इंटरडिसिप्लिनरी करने के लिए कोशिश करते हैं. लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में लाने के लिए if there is a need, it's not compulsory that your research has to be multidisciplinary. Not necessarily. मल्टीडिसिप्लिनरी अगर डिमांड करता है आपके रिसर्च, आप एक दूसरी डिसिप्लिन को शामिल करते हुए, जैसे एग्जांपल आप कोई साइंस में, इंजीनियरिंग में ये ज़्यादा होता है चीज़ें, इवन मेडिसिन में दिस डेज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. आप दो डिसिप्लिन विद इन दैट आप कंबाइन कर सकते हैं. एक सोशल साइंस, एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी आप कंबाइन करके रिसर्च कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ नीड. अगर आपकी रिसर्च उतनी इनोवेटिव हो, डिमांड करता हो तो पॉसिबल है. मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में हमेशा होना जरूरी नहीं है. Next question is, are vocational courses also included in multidisciplinary areas? Yes, because vocational courses can belong to your discipline. Community engagement, environmental could also be geared towards your own discipline. It depends on you as professors, how do you design your curriculum. But vocational courses necessarily, अगर आप दूसरे discipline से, for instance, a vocational course in music, आप तो म्यूजिक डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा ना वो कोर्स. सो कोर्स तो आप नहीं दे सकते हैं. साइंस को म्यूजिक का ओरिएंट आप करेंगे वोकेशन में, मुझे थोड़ी कम समझ में आता है इस बारे में तो, लेकिन म्यूजिक यू हैव टू टेक फ्रॉम अनदर डिसिप्लिन. सो जरूरी है कि अगर आप वोकेशनल कोर्सेज, ज़्यादा स्किल बेस्ड कोर्सेज दूसरे डिसिप्लिन से लें, बट लिमिटेड, बिकॉज देयर विल बी स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्रॉम योर डिसिप्लिन ऑल्सो. खाली आप डिसिप्लिन में थ्योरी थोड़ी पढ़ाएंगे, आपके डिसिप्लिन में भी थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप उतना ही लागू है जितना स्किल बेस्ड दूसरे डिसिप्लिन के कोर्सेज के ऊपर लागू है. तो स्किल बेस्ड कोर्सेज कुड बिलोंग टू योर डिसिप्लिन, बट प्रिफरेबली माय अंडरस्टैंडिंग इज इट विल बी बेटर, यू मे डिफर दैट स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स विल हेल्प मी मोर टू इम्प्रूव माय एम्प्लॉयबिलिटी.
जी। Yes. Another question is related to skilling only. Skilling and employability are highly important. Can we not have at least one compulsory course on some basic skill at each level or year of study? Yes, the formulation is like that because your 40 credits a year, 4-year program leads to 160 credits. That your discipline core is not one semester, skill is another semester. It's not like that. So starting from the beginning, you have to design in such a way that almost every semester or at least every year there are skill-based courses. Skill-based courses could be related to other disciplines. Skill-based courses could be related to environment science. Skill-based courses could be related to community development itself. The skill-based courses could be related to the cognate disciplines that I mentioned, which will be contributing more towards multidisciplinary education, law, management, that I mentioned a little earlier. So skill कोई एक टाइम में किया और ख़त्म कर दिया ऐसा नहीं है. Skill continues for the whole 4 years. It depends on आप कहाँ उसको pitch करेंगे. Then it will depend on, because skill will involve some kind of a face-to-face hands-on. Skill will also involve internship. आप उसको उसी तरह करिकुलम बनाएंगे जो स्टूडेंट को दिक्कत भी ना हो. Yes. Next question is, if the student completes credit for his graduation degree from 2 different colleges, then which college gives him the graduation degree? दो बातें हैं. There is a joint degree program. There could also be dual degree program. There will be credit accumulation from other colleges. 3 चीज़ें. पहला क्रेडिट एक्यूमुलेशन. मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, दूसरा कॉलेज उसी शहर में है, मैं उसी कॉलेज से डिक्लेयर किया, मेरे एकेडमिक काउंसिल में पास हुआ, मेरी कॉलेज ने मुझे स्वीकृति दिया कि आप ये कोर्स दूसरी कॉलेज से कर सकते हो जो इवनिंग को है. मैं अगर वहाँ से करता हूँ, वो क्रेडिट मेरा इस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा. किसके माध्यम से? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. मेरा जो बैंक में क्रेडिट रखा हुआ है तो उसमें वो क्रेडिट में चला जाएगा. मेरी कॉलेज वो क्रेडिट से उधार डाउनलोड कर लेगा कि साहब आपका वहाँ क्रेडिट ख़त्म हो गया, हमने उसको शामिल कर लिया. जो आपकी मेन कॉलेज है वही कॉलेज आपको डिग्री देगा. पॉइंट नंबर 1, आप दूसरी कॉलेज से कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज ले सकते हैं अगर आपके शहर में है. नहीं है, आप डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन से ले सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि आप जॉइंट डिग्री भी दे सकते हैं. जॉइंट डिग्री विद इन द कंट्री, जॉइंट डिग्री आउटसाइड द कंट्री. कोई एक फॉरेन यूनिवर्सिटी और आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी जॉइंट डिग्री दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट डिग्री में ये होगा कि जो कोर्सेस आप पढ़ा रहे हैं वही कोर्स उसमें रिपीट ना हो. इट शुड बी डिफरेंट कोर्स. और आपके रेगुलेशन बताता है not more than 30% of the courses can be taken from the other institution for a joint degree. आप 30% से ज़्यादा ले नहीं सकते. तीसरी बात, डुअल डिग्री. डुअल डिग्री हम लोग इग्नो में कहा है क्योंकि हम लोगों का एडमिशन में दिक्कत होता है. सेम स्टूडेंट को, सेम स्टूडेंट कैन टेक अप, अगर हम में से एक लिया है डिग्री प्रोग्राम और बाहर से किसी संस्था से वो और एक डिग्री प्रोग्राम लेगा, किस वक्त एडमिशन लेगा, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. अगर इग्नो से 2 डिग्री वो ले रहा है तो हम लोगों ने कहा पहला डिग्री और दूसरी डिग्री के बीच में एक सेमेस्टर का फासला रहना चाहिए ताकि हम लोगों का एडमिशन और एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो. बिकॉज जनरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दे विल बी जनवरी एडमिशन, दे विल बी अपीयरिंग इन दिसंबर. अगर सेम जनवरी में दूसरी डिग्री भी ले लिया तो दिसंबर में 2 एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे नहीं पाएगा. अगर जुलाई में एडमिशन लेगा साइकिल में तो नेक्स्ट जून में वो एग्ज़ाम दे सकता है. सो 3 थिंग्स. 1 कैन टेक courses from other institutions either directly from the same city or through distance learning. 2, there can be dual degree programs. 3, there can be joint degree programs. जॉइंट डिग्री में दोनों संस्था एक ही डिग्री में साइन करेंगे, दोनों का मेंशन होगा और कौन सा संस्था से 30% लिया, कौन सा संस्था से 70% कोर्सेज लिया वो मेंशन होगा. डुअल डिग्री प्रोग्राम 2 संस्था अपनी अपनी डिग्री अवार्ड करेंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेम ईयर. कोई चिंता की बात नहीं है. अर्लियर इट वॉज नॉट पॉसिबल. सप्लीमेंट्री को लोग कहते थे सप्लीमेंट्री दे रहा है तो ये तो फेल ही है समझो, लेकिन आज की तारीख में डिस्टेंस लर्निंग तो सप्लीमेंट्री है. यू गो ऑन एक्यूमुलेटिंग योर क्रेडिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. उसके हर साल हर सेमेस्टर तो सप्लीमेंट्री है समझो.
तो लेकिन वो आज की तारीख में वो दिक्कत नहीं है। और डुअल डिग्री इट वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, और डुअल डिग्री आप एट ए टाइम ले सकते हैं, बट रिसर्च में नहीं, और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में प्रोफेशनल रेगुलेटर्स उसके बारे में डिसाइड करेगा। Next question is, how many subjects can a student take up in multidisciplinary education? नहीं, समझ में नहीं आया। इन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आपके में क्रेडिट स्ट्रक्चर आपको दिखाया, वो क्रेडिट स्ट्रक्चर अगर पावर पॉइंट आपके पास है तो आप डाउनलोड करिए, नहीं तो पावर पॉइंट हम वीडियो में तो है ही है, तो वीडियो इज़ रिकॉर्डेड, हम वीडियो को डाल देंगे। वीडियो विल बी अवेलेबल इमीडिएटली राइट नाउ इन यूट्यूब, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इसी नाम पर, और उसी पावर पॉइंट को बारीकी से देखिएगा, क्योंकि मैं अलग से आपको ईमेल नहीं कर सकता। पावर पॉइंट को बारीकी से देखिए, उसमें क्रेडिट आवर्स फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोर्सेज डिफाइंड हैं, तो इसलिए तो आप कितनी मल्टी डिसिप्लिनरी होगा तो वो उसी पूरी डॉक्यूमेंट में है, वो टेबल में नहीं है। आप अगर वो पूरी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो देयर इज अ लिमिट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, आप इतने लिमिट तक ले सकते हैं। Next question is, what are the examples of multidisciplinary courses? नहीं, एग्जाम्पल क्या है, मैं दूसरी डिसिप्लिन से लूंगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, सीधी सी बात है। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो अगर मैं अपना कोई सोशल साइंस से ले लिया, साइंस में से एक दूसरे डिसिप्लिन से ले लिया जो बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता मेरे डिसिप्लिन से, मेरी पढ़ाई के साथ, लेकिन मैं उसमें जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं उसको कर सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगा, स्ट्रक्चरली कोई डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं होगा, तो वो ले सकता हूँ। कोई सोशल साइंस से ले सकता हूँ, कोई मैनेजमेंट कॉमर्स आईटी से ले सकता हूँ, कोर्सेज अवेलेबल है, एंड वेराइटीज ऑफ डिफरेंट एरियाज। और आजकल साइबर लॉ, क्या क्या चीज़ उपलब्ध जरूरी हो गया आज की तारीख में। पैरामेडिकल में एक आयुर्वेदा, एक योग शिक्षा, मैं किसी के बारे में मैं कुछ नहीं है तो कल को एक योग शिक्षक बन जाऊंगा, मैं एक एनजीओ अपना करूंगा ये पढ़ने के बाद, बीए पढ़ने के बाद। योग का आजकल बहुत है, मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके सब खोल रखे हैं, उनके बहुत बढ़िया चल रहा है, दे आर एक्सपर्ट्स नाउ। तो देयरफॉर डिसिप्लिन का कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी दूसरे डिसिप्लिन से ले सकते हैं, उसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी कहेंगे। Okay. जी। Next question is, what will be the scope for job opportunities in multidisciplinary system? मल्टीडिसिप्लिनरी का स्कोप तो ज़्यादा बढ़ेगा ना। आज की तारीख में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं साहब इंजीनियर्स जो हैं आज की तारीख में, तो इसमें तो 50% जनरली आई एम जस्ट सबमिटिंग टू यू, वो हम एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कि दे आर नॉट गुड इंजीनियर्स, लेकिन उनके पास मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स जो हम लोगों को चाहिए वो उनके पास नहीं है, और आप अपनी करिकुलम चेंज नहीं करते हो, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, मेरी चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं एक डिसिप्लिन में बंद जाता हूँ, मेरे को मौका 1, 2, 3 और 4 डिसिप्लिन से अगर मैं लेता हूँ, मेरा तो भाव बढ़ता है ना, मेरा क्वालिटी बढ़ता है, मेरी स्टैंडर्ड बढ़ता है, मेरा आउटलुक बढ़ता है। ये तमाम चीज़ें, एक डिसिप्लिन में बंद जाना और उसमें एक जॉब को तलाश करना आज की तारीख में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये काम नहीं दे रहा है। देयरफॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे नहीं दे रहा है। ट्रेडिशनल मेंटालिटी से हमको बाहर आना चाहिए। मेरे को कई डिसिप्लिन में, जितना डिसिप्लिन से ले सकता हूँ मेरी चॉइस के हिसाब से, मुझे मौका दीजिए, मैं उसमें तलाशूंगा। कुछ नहीं हुआ अपने डिसिप्लिन में चला जाऊंगा, लेकिन वो डिसिप्लिन मेरे अपनी समझ को काफ़ी बढ़ावा देगा, मेरी पर्सनालिटी को बड़ा करेगा, मेरी वर्ल्ड व्यू को बड़ा करेगा। मैं एक मेडिटेशन में दूसरा कोर्स डिसिप्लिन से लूँगा तो मुझे मेडिटेशन और शांत रहने में, अच्छे शांत खुश रहने में मदद करेगा। सभी खुश रहना चाहते हैं, तो मेडिटेशन का कोर्स तो सभी के लिए ज़रूरी है। और कल को कुछ नहीं हुआ, मैं मेडिटेशन में कुछ शुरू कर दूंगा, आप हाथ पैर मारिए ना, तो देखिए आप जो हम सोचते हैं कि एक डिसिप्लिन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहना चाहता, जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे वो सब हट गए जी। आज की तारीख में कई तरह के आप हाथ में रखिए और आपकी क्या चीज़ किस वक्त काम में लग जाए, यू नेवर नो। और 1-2 क्वेश्चंस। Okay. There is a general question that what is the relevance of NEP 2020 for the teachers? रेलिवेंस ऑफ NEP 2020, ये तो कहते हैं साहब ये तो पैराडाइम चेंज कर देगा, ये तो देश को परिवर्तन कर देगा, क्या क्या कर देगा। इट इज़ वेरी मच ग्राउंडेड, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी जो होना चाहिए। वी आर कन्फाइंड टू डिसिप्लिनरी ब्लाइंडेडनेस,
टू यूज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड। हम अपने डिसिप्लिन में बंद गए हैं और उसमें हमारा सब दिमाग बंद हो गया है डिसिप्लिन के अंदर। हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज़ वन, हम उसको डिसिप्लिन में बांधते हैं। तो जो नॉलेज मेरा अपना डिसिप्लिन का दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उसको तो कम से कम जानूं। और दूसरा, नेशनल पॉलिसी का रेलिवेंस ये है कि साहब मेरी भारतीय ज्ञान परंपरा जो इंडिजिनस नॉलेज है, सभी देश अपनी कल्चर सिस्टम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारा देश, और ख़ास करके साउथ एशिया, हमारा देश नहीं पूरी साउथ एशिया में हम लोग अंग्रेज़ के पीछे पढ़ के इतना अंग्रेज़ का दिमाग ख़राब हो गया है हम लोगों का। जर्मनी में पढ़ा, जर्मन में पढ़ा था, फ्रेंच। मैं लास्ट ईयर 2 साल पहले गया कीनोट को मॉस्को को, रशिया में पढ़ा था, अंग्रेजी नहीं समझते। South America is entirely those Commonwealth countries which have been influenced by English, they are bound by English। और इंग्लिश लिटरेचर के हम बंद गए हैं। इंग्लिश से लिटरेचर के बाहर जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिटरेचर है हमें वाकिफ नहीं है, अपनी देश का लिटरेचर में वाकिफ नहीं है। बहुत बड़ा नॉलेज और खजाना हमारा देश में है और देश में भी है, बेस्ट प्रैक्टिस हम लेंगे। तो नेशनल पॉलिसी काफ़ी हद तक, पॉइंट नंबर 1 इट इज़ टॉकिंग टू इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 मेरे को एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बनाने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 3 मेरी देश धरोहर, भारतीय ज्ञान धरोहर, भारतीय ज्ञान परंपरा धरोहर के साथ मुझे जोड़ने के लिए कोशिश करेगा, और जिससे मैं बिछड़ के आज भटक रहा हूँ ये भी इस तरह का है। तो आप देख लीजिएगा सारा दुनिया में यही हाल है। मैं कोई ज़्यादा वैल्यू बेस्ड या रिलीजियस नहीं हो रहा हूँ, बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज़रूर हो रहा हूँ। आप सबको स्पिरिचुअल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कह रहा है कि साहब हम जितनी थ्योरी पढ़ा के थक गए, लेट अस ट्राई टू अप्लाई थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। 50-50 फॉर्मुलेशन, 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नाउ लेट अस ट्राई टू अप्लाई थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज नॉट ओनली क्लासरूम, प्रैक्टिस इज समाज। समाज में किसी तरह हम जो सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे, वो बहुत बड़ा है। हम एप्लीकेशन में बहुत पीछे हैं। मैं बहुत देश घुमा हूँ, इसलिए इस लिहाज से आपको मैं बताऊँ, बहुत सारे देश में, इंक्लूडिंग मैं तो 20 बार चाइना चला गया। चाइना 13-14 years back was behind us, but today it is almost parallel to United States. In fact, it will be crossing to United States any time. चाहे आप रिसर्च ले लीजिए, साइंटिफिक रिसर्च ले लीजिए, पेटेंटिंग लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पब्लिकेशन साइटेशन, सभी में नेक टू अमेरिका। हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हमारा सिस्टम एकदम बुरा है, ऐसा नहीं है। हम उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी पीछे रहते हैं, और नेशनल पॉलिसी कह रहा है थ्योरी प्रैक्टिकम इंटर्नशिप इज़ ए मस्ट। उसको और मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनेंगे, ज़्यादा क्वालिटेटिव बनेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, अच्छा इंसान बनेंगे। तो इसलिए नेशनल पॉलिसी काफ़ी हद तक, ये नहीं कि पुरानी में से एकदम हटके है, पुराने बुरे थे नेशनल पॉलिसी ये अच्छा है, ऐसा नहीं है। पुराने भी अच्छे थे। पुराने पॉलिसीज़ को हम तो पूरी तरह काम में लगाए नहीं। आप पढ़िएगा 1986 पॉलिसी और 68 पॉलिसी को। लेकिन ये जो 2020 का पॉलिसी है फाइनली बन के आया, काफ़ी जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड और हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम, इस तमाम चीज़ों को शामिल करते हुए, जो आज की तारीख में 21st सेंचुरी स्किल की ज़रूरत है, हमारा भारतीय धरोहर 21st सेंचुरी स्किल को शामिल करते हुए ये एक बेहतरीन ढंग से आया है। और इसके लिए पैसा चाहिए, शिक्षक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, एकदम चीज़ें चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, पैसा चाहिए। अगर ये आर्गूमेंट है साहब ये सब चीज़ करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बट हमारा भी तो ज़रूरत है। लेट अस स्टार्ट रिफॉर्मिंग आवरसेल्फ एंड देयरफॉर द सिस्टम विल रिफॉर्म। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. So viewers, with this we will conclude today's session. I once again thank today's resource person Professor Santosh Panda for a very fruitful session, and request our participants to go through the e-contents and videos that are available in Swayam platform, and you can access those from the link that we have sent in the welcome message. Best wishes to you. Thank you very much. और उसके साथ साथ एक मैं कह दूं 4/15 से हम लोगों का 2 वीडियो ये स्वयं प्रभा 20 चैनल में चलेगा, और जो 2 वीडियो आपकी स्वयं प्लेटफॉर्म में 31 वीडियोज़ हैं, बड़े लोगों के स्कॉलर्स की वीडियोज़ हैं,
वो वीडियो चलेगा, अगर मौका मिले उसको देखिएगा, दैट विल ऑल्सो बी यूजफुल टू यू। थैंक यू। एंड ये वीडियो आपकी यूट्यूब में अवेलेबल होगा और थोड़ी दिन के बाद इमीडिएटली एडिट होके आपकी स्वयं प्लेटफॉर्म में आएगा। आप ज़रूर स्वयं प्लेटफॉर्म जाइए, डिस्कशन फोरम में शामिल हुई और बड़े पैमाने में एग्ज़ाम दीजिएगा। और 50% लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसको तो आप समझ जाएंगे तो 50% इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। थैंक यू। Thank you.
Now, before I start with the actual presentation of the policy itself, I will spend a few minutes with respect to the relevance of education in the present context. A lot of things have been asked to me in public with respect to why at this time an educational policy, what kind of relevance does it have in the context of India and the context of the global developments. And always you have to articulate some aspects of it. Of course, first we all recognize there's more than 3 decades since we had the last one, and there are several developments that have happened. India, of course, will have the highest population of young people in the world over the next decade, and we recognize that nearly 50% of the population will be below 35 years of age, aspiring for high quality education. This democratic dividend certainly has to be taken advantage of. I don't think we have discussed it in several platforms. We have debated it, and certainly this is a direction and aspiration for the country which we have to realize. Globalization and demands of a knowledge economy and knowledge society call for emphasis on the need for acquisition of new skills by learners on a regular basis for them to learn how to learn and become lifelong learners, a critical consideration to be addressed appropriately. And that is where this education policy certainly has focused on. Changes in knowledge landscape, especially science and technology, I don't have to say here, but advances in big data analytics, machine learning, artificial intelligence, all demand skilled workforce involving mathematics, computer sciences, data science, as well as multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities. The education of future need to be reconfigured in order to meet the goals of the global education development agenda. We are a part of that. The goal 4 of the Sustainable Development Goals 4 of 2030 that seeks to ensure inclusion and equitable quality education and promote lifelong learning for opportunities for all. So this is broadly just to give it kind of a flavor of the kind of consideration probably the people who matter in terms of defining when to come out with a policy thought about. Now, how did we go about? A little bit of that also is of interest for the audience here. The process, of course, was that we had the members of the policy committee with the government set it up. And then we had a members of a drafting committee. We thought that besides the policy framing, we also need to bring it up in a way in which it can be presented. We had a special drafting committee. It had members of the policy committee also. And then we had a set of members, experts, who provided a kind of a technical secretariat support for doing this. And not to be satisfied with it, this is where I have my own strong views. The question of being independently evaluated with respect to the type of presentation we are making, ideas that we have created, and the strategy we have crafted. We put certain peer reviewers, people who are away from the policy formulation, who are very well aware of the kind of educational system, the academic system this country over the years, and therefore competent enough to give us very vital inputs about the first level of drafting this policy. So there were peer reviewers here. Discussions and consultation, we went through a very, even though this particular policy was initially having a basis of previous policy document, in fact, 4 years of work, very intense work had gone through in the formulation of this policy earlier itself. Documentation from downward consultations were there, submissions from individuals and groups were there. So there was the previous Honorable Minister of Education. We had also the TSR Subramaniam Committee and many others. So we had many things to fall back on. The question was to review them, to adopt them, and to see where we need to move extra efforts. And that is where we saw that discussions and consultations with the different stakeholders, including organizations, institutions, and individuals. We had quite a number of inputs which were new, which had very unique in terms of things which were not earlier presented or considered for discussion. And of course, when everything was ready and when we made an initial presentation to the ministry, they felt that ultimately to go into the public domain is a national, very important national document. We need to get the public responses of what they are in for the future of education. We got more than 2.5 lakh responses from both from the school and the college education, higher education point of view. So that was another major thing. We went through a consultation with the state educational authorities, including in many of the states, we had also consultation with the state ministers.
And then we had a review, so that when the policy was in the near final stages, the number of reviews were conducted by the Honorable Prime Minister himself. In fact, he went through every aspect of the policy and every items of the policy, and he wanted to make sure that there is a level of pragmatism and the ability to carry this forward in the implementation domain. So this is one of the important things that the Honorable Prime Minister, he came out with several interesting suggestions also, I should mention. So that is the other part of it. And finally, we got the cabinet approval on the 29th of July 2020. Immediately following that, for a number of measures, the first and foremost was to make sure that there is a very intense familiarization process for this. So major conferences with chancellors, vice chancellors, directors of higher education institutions, other high-level functionaries were convened. These are meetings convened by UGC and Ministry of Education and addressed by Honorable Prime Minister and His Excellency the President of India. So these were kind of things that were also carried. This also underscored the importance at the highest level that they attach to the policy. And now we are in the stages, and I will say at the end of my talk a little bit about how the concerned agencies and the ministry is moving towards the implementation. Now, to just give a framework for the policy provides an integrated and flexible approach to education. It has kept the interconnectedness, the various phases of education in mind, and how the same will enable continuity, coherence, and processes to ultimately realize an end-to-end educational roadmap for the country. An articulation of a broad view of education encompassing the holistic development with special emphasis on kindling of the creative potential of each individual in its richness and complexity has grown increasingly popular in the recent years, several domains of discussions. The policy thus aims at the development of the 21st century skills. I don't have to re-emphasize what these 21st century skills are here for the students, while giving them the flexibility in making choices consistent with the dynamics of a knowledge society. Before we go straight into the higher education and go into the details of the same, a little bit about the connection between the school education and the higher education. We do recognize, all of us, and the policy does so, the interconnectedness of the various phases of education. I mentioned it earlier. School education is of intrinsic importance, there's no question. How a student experiences the schooling phase of education could have a significant influence on those subsequently pursue higher education, including professional and vocational, besides, of course, helping to lay the foundation for lifelong learning. So keeping this in mind, I'm trying to first put the overall policy element, the element that is gone into the policy as a part of the academic side, not just on the governance and other areas. We have the early childhood care and education, home education, Anganwadis and preschools. One of the very key elements, because we did make transformatory recommendations in the context of the early school education. I will say a few words about it in the subsequent projections. And right now it is divided over a 15-year period of foundational, preparatory, middle, and secondary. We'll see the details of that. On the higher side, of course, we have the undergraduate, general education, teacher education, professional and vocational to focus a little bit. And then we have the postgraduate, masters, and PhD, need not be emphasized here. And ultimately, a national research foundation, a unique institution that will spur the research, and particularly in the educational institution and university system particular. And then, of course, we have areas like lifelong learning, adult education, and many other areas that have been also including the use of technology for education. These are all part and part. So this is just the broad elements of the policy which you have touched upon in the policy. And I will, of course, as requested, I will try to concentrate on the higher education, but not before saying a few words about the kind of things that we have thought about in bringing the school education to a new domain. The extent 10+2 structure is what the early school education will be. It will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5 plus 3 plus 3 plus 4, covering the ages 3 to 18. I have shown it here in terms of 4 levels. The foundational level, where the policy, this is the education starts, unlike at 6 years, now it starts at 3 years. 3 to 8 years is what we characterize the first 5 years as the foundational
phase of the school education, 3 years of pre-primary, preschool, and then we have a primary education, which is first and second class, the grades. So you have the 5 years here. What is important in this phase, which will take you up to the age of 8, is the fact that the policy recognizes the individual differences in the cognitive development of children at this stage, and therefore formal structured learning will be absent during these 5 years. So the important thing is that each child has to be evaluated with respect to its growth of the brain, and these are not uniform, so there is no linear pattern in which the growth occurs. And it's also important that 85% of the brain virtually is matured by the age of 8. So we need to make sure that the learning process is suitably adopted, that maximal advantage of this kind of a pattern by 85% by the age of 8 is whether it is language learning, whether it is literacy and numeracy. These are all critical elements in this phase of the foundational phase of the school education. This you carry forward a little more from unstructured, you go into the curricular structure in the next 3 years, that is from age 8 to age 11, where the curricular structure and standardization can be slowly introduced. And carrying this forward for the next 3 years, you virtually go into subject areas. You have a teacher children student interaction much more effectively, and also have the capacity for abstraction, because that is something which was in the earlier 2 phases much less because of the nature of the brain growth. And lastly, we have the secondary education, the last 4 years of school education, ages 14 to 18. There will be multidisciplinary orientation with exit options. This is the phase that will prepare the student for undergraduate program, and that's why I'm coming to this, because undergraduate program is very much related to the kind of orientation in the policy that we have tried to create in the secondary level of the school education, including early introduction of liberal arts education. So this is the kind of a thing. Of course, you have vocational education here, you have the exit option here. If you want to leave at the age of 18, the school education and take up some kind of a job, there are enough provisions for that, enough training and other kinds of things. In fact, we have recommended that we need to have a youngster who knows at least one vocational area thoroughly, 100%, in by the time he leaves the school, that kind of a thing. And the first 4 elements of the vocational education in the overall scheme is a part of the secondary and part of the middle as well as the secondary education. So this is the broad thing. I thought I wanted to emphasize this mainly because these are the times in we understand today the neural sciences and the kind of cognitive science which dictated this study of creating a policy around the present understanding of the brain and its growth. And I thought I should bring it to the attention of this erudite audience. And this is just to give you an idea of a brain, how critical it is to make sure that we make use of the brain and its stimulation, the early phase of the child's growth. And one can see very clearly the cognitive stimulation, what it does to the brain, to a case where such a simulation has not occurred. We can very clearly see the temporal lobes, how different they are in terms of its growth and maturity, and which essentially means how much you take advantage of the pattern of the brain growth in terms of the learning process and also the teaching process. Now, having said all this with respect to the school education, we move over to the undergraduate education, part of the higher education. What the policy does is to promote a holistic. We have made a broad approach which is holistic and multidisciplinary at the undergraduate level. And this is something which is not new to this audience, and especially I don't know IIT Delhi's some of the very early efforts in the context of holistic and multidisciplinary education. They generate more imagination and creativity in the student to ensure their all-rounded development. And of course, the concept which we today term as a liberal education, which is really multidisciplinary and holistic, is an age-old idea in the Indian context. I don't have to say this again, the Banabhatta's Kadambari, which is considered a person was recognized as truly educated when he mastered the 64 kalas encompassing music, dance, painting, culture, languages, and in addition to subjects such as science, engineering, and mathematics, as well as vocational subjects. Liberal education explores the remarkable relationships that exist among the sciences and humanities, mathematics and arts, medicine and physics, etc., and more generally,
the surprising unity of all fields of human endeavor. A comprehensive liberal education develops all capacities of human beings: intellectual, aesthetics, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. So, this is the approach, and this is the one we have tried to translate into the policy as a crucial step to lead India into the 21st century. The fourth industrial revolution, multidisciplinary education is central. Even engineering schools, I know IITs following this, in this case, will move towards more holistic multidisciplinary education with more arts and humanities, while arts and humanities students will have to learn to aim more science, while all will try to make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. India's rich legacy, I mentioned about Bhanabhatta's work and many other kind of work subsequently in the arts as well as in sciences and beyond, will significantly help in making the move towards such an education, hopefully an easy and natural transition. Now, how is it that the policy has put that in concrete terms? Liberal education with broad multidisciplinary exploration, it has to be an imaginative and flexible curricular structure, creative combinations of disciplines of study. This has been chosen, whether it's arts, crafts, sciences, mathematics. One has to see how do you create a creative combination. This has to be all worked out. And multiple exit and entry option is another important feature of the undergraduate education. And master's and doctoral education will provide a sub-based specialization as a part of the higher education. The 3 to 4 year undergraduate course with multiple exit options, the 4-year program is the main recommendation in terms of the undergraduate program. Undergraduate degree will encompass, of course, liberal arts, multidisciplinary and holistic education. And then you have the chosen major and minor concept that is there. We have the vocational subjects, and later on, even professional education will be brought into this kind of an undergraduate education, which is a 4-year. The 3-year program, which is currently very much there, will be retained with the necessary changes to bring in more holisticity and interdisciplinarity. Both the 3 and 4-year programs lead to a degree with honors with research work. So that is another thing that one. So there is a provision for research work in the undergraduate program, which prepare on one side it really enriches the youngster, on the other side we certainly have a better preparation for the higher education. And ultimately, exit provision does exist with a 2-year diploma in the with a 2-year diploma at the end of 2 years of undergraduate, and a 1-year certificate at the end of the first year of the undergraduate education. These are all drawn in a way in which there is enough provision for the person when he exits, he will have an appropriate kind of a professional career which can be chosen. And this is a preparation that you try to do in the first year and second year of the undergraduate education, with the proviso that in case in the later years you want to come back to the education with certain provisions with respect to the preparatory part of the entry, you can still continue your education to a 3rd year or a 4th year or even higher education part of the postgraduate education. This is also kept as a flexibility in the system. On the master's side, 2 years for those with the 3-year undergraduate degree, 1 year for those with the 4-year undergraduate degree with honors, and an integrated 5-year program is the 3 kind of flexible way in which you can go towards master education. Next one I would like to bring is the integrating professional education. Regarding the integration of professional education with general education, the policy aims to take a holistic view to the preparation of professionals by ensuring broad-based competencies and understanding of the social human context, a strong ethical compass and addition to the highest quality professional capacities. There is something holistic about the recommendation that we have made. I'm sure most of the professionals are very aware of this particular part of it, especially the IIT faculty and the academics. And but we have made a strong pitch for this because we think many of the higher education institutions, especially the university system, certainly need to address this much more seriously than what has been done so far. All institutions offering either professional or general education must be organically evolved into a multidisciplinary institution offering both by 2030.
The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. Thus, this approach will be applicable to all higher education institutions across the current streams, which will eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. This is ultimately the objective by 2030, 2035. There is certainly a time frame. It's not easy to make this kind of transformation, but we think that we need an integrated professional education as a part of an overall higher education. Now we come to the quality higher academic research in the fields. Again, I don't have to carry coal to Newcastle by giving you why we should do research, but put some numbers here just to see that the situation in our country with respect to research. Whereas IITs and those ICERs and things like that, you have tremendous research and vibrant activity going along with teaching. The broader question of the university systems, both state and the central, I think we need to do quite a lot. Even though we do address this question of a quality academic research in the overall context of higher education institution, we would like to particularly make this policy focused on educational systems in the university, and many of the state universities and other private and some of the other private universities certainly has to review this in the context of the type of recommendation we made. And we do know the importance of the European Union. Estimate that 2/3 of the economic growth of Europe during they came the research. You had also, if you really look at the European accomplishments in the research and innovation, I was just trying to look at some of the details. 15% of all productivity gains in 2013, and that an annual increase of 0.2% of GDP in R&D investment result in an annual increase of 1.1% in GDP, a five-fold return for the type of outcome that they were getting. If you look at the present research and innovation investment, in our case, 0.7, we can keep debating on that. One has to compare it with respect to something like 2.8 in US or for 4.3 in Israel or South Korea. These are the kind of, which are 3 times the proportion of GDP. And this lower level of investment certainly meant the number of researchers in India per lakh of population is just 15. Numbers are 400, 800 kind of numbers. If you talk of US as an example, other it has an impact. I don't have to again emphasize low levels of patent application and scientific publication. So these are the kind of things, and certainly it was a very important agenda in the another discussion with regard to propagating research in the higher educational institutions. And so we have spent a considerable space and time to make sure that we have some very tangible recommendations on promoting this. Now, how have we tried to recommend it? We have tried to recommend the creation of a national research foundation. It is it is based on the fact that the policy will put emphasis on catalyzing and energizing research and innovation across the country in all academic disciplines, with particular focus on the state universities and colleges. I said that in the beginning, and that is where really the lacuna does exist, and they are serious there too. A fund to seed research in all universities and colleges so that synergies between the research and quality education can be leveraged maximally. NRF will fund across all disciplines. It's not only in engineering, and also it will expand the research and innovation at all universities and colleges, including private institutions. We have not made a distinction between private institutions and public funded institutions. And the criterion will be, of course, the merit of the proposal and the kind of capability to do research and the type of outcomes. And we need to make sure that they get the benefit of a funding system where this can be pushed further. After all, they also educate Indians, and many of the people depend on the private institutions for education. The NRF will have the provision to cover many themes: science, technology, social sciences, arts, humanities, and many more. In the scope, of course, everybody understands funding research through a competitive peer review process, building research capacity at academic institutions across the country through mentorship. There are very specific recommendations we have made regarding the mentorship, the type of bringing in
people who are veterans of research, who are at this time available for guiding research in these kind of institutions, who can spend some time doing research, guiding research, and also establishing the capability to conduct research in these kind of institutions, and then create the beneficial linkages between researchers, academy, everybody talks about this, and disseminating research through seminars, which is the other aspect of doing research. So these are the kind of things. This is just to give a little brief summary, a snapshot of the kind of thought that we have put into the National Research Foundation. We think this needs to be established, and this is also going to be, we had, of course, in our mind, things like the National Research Foundation of USA. There are models of establishing this kind of a system, which really becomes a place where they address the excellence, the relevance, and the kind of outcomes with respect to research. And this has had a very strong influence on the support of research in the educational systems in many of the advanced countries, and particularly if you look at the models like US and Europe. And the other aspect that we have addressed is question of energized and educational capable faculty. We have spent devoted considerable space with regard to the questions of the faculty, the quality and engagement of its faculty. And virtually we can say the faculty is put back at the heart of the higher education. The rampant practice of contractual appointment, one issue, very heavy teaching loads, these are all may not be applicable to institutions like IITs, but these are anyway, I don't have to emphasize these aspects of it with respect to the broader issue of higher education. The infrastructure support, most faculty do not even have a structural faculty recruitment and development plan. So we have gone into the details, areas like recruitment, development plan, career proposal, progression, compensation management. Every part of the institutional development plan should carry this in the higher education. Appropriately designed a permanent employment tenure track system for the thing by 2030. Autonomous faculty empowered to make curricular choices, conduct assessment of students, infrastructure for continuous professional development. These are other aspects of it. And appropriately designed bridge courses for mid-career professionals to get into teaching. That's also available, so that if anybody wants to get into the teaching profession from another area, where you need to facilitate this by the appropriate bridge courses that can be worked out. One of the important things that we have tried to do is to consider the school education and the teachers for the school education. One thing we found that the existing system, the school education, doesn't meet the type of standards and the type of things that we need to have as a background for teaching at the school level by the conventional educational system providing teacher education. What we have tried to do is to move the school education preparation will be done in the multidisciplinary universities. Departments of education will be set up in many universities to offer a 4-year integrated state-specific BEd. The whole idea is to bring in BEd as one more of those undergraduate educational stream, one of the undergraduate educational stream, put it at a par with the other professional educational themes as well as the mainstream education. So BEd will be an undergraduate program of study covering both disciplinary and pedagogic teacher preparation courses for each stage of education, foundational to secondary. All subjects including arts, sports, vocational education, they will be mainstream. On par with other undergraduate degrees, gradually the 4-year program will be eligible for master's and PhD programs. And the current 2-year BEd program will continue till 2030, but that after 2030, only those institutions who are capable or who are qualified to provide a 4-year teacher education can offer the 2-year teacher education. So we want to make sure that the standard, the quality, and the excellence that is intrinsic to defining the teacher education and preparation, certainly it takes into account through the higher education systems overseeing the teacher preparation and education. 2-year program will be used for lateral entry of school teachers. There are also many interests in the people becoming school teachers in the lateral mode. Specifically designed courses in the pedagogy for mid-career professionals to become faculty will also be introduced. And I don't have to say substandard and dysfunctional teacher education. Thousands of them have been already shut down. And this is recommended to be reviewed. Either they move towards institutions like the degree-giving autonomous colleges,
or they close down or move over to other areas where the teacher education is not the main focus for these institutions. Something on the educational technology, Professor Ram Gopal mentioned about this with respect to the Prime Minister's this thing. We have addressed the questions of integrating technology at all levels of education. There is a very specific section where we have discussed this. I don't think I need to go much into the details of this. Again, the questions of four broad categories, well known: improving teaching, learning, imitation, and supporting teacher preparation, continuous teacher professional development, enhancing educational access to disadvantaged groups, streamlining educational planning, administration, and management, and teacher training for trade. The edutech is critical. And towards this, I also bring in some example where improving teaching, learning, and evaluation as a part of the educational system's resilience during the recent crisis like the COVID-19, the online education, synchronous mode, live interactions, and asynchronous mode, blending high-quality pre-recorded content, rapid feedback with automated smart evaluation. So these are the kind of things on the improving the teaching and learning and education. Example regarding the supporting the teacher education and continuous teacher professional development, you have the recommender systems for content and certifications. Just another example in the COVID-19 scenario, the enhancing educational access to a disadvantaged group, connect the few specialized teachers to virtual classrooms of learners with specific needs, must address the digital divide. That is the biggest problem with respect to the implementation of some of the digital divide, and certainly this is to be seen. Now, streamlining education planning, administration, and management. We are also trying to set up as a part of this a national repository. There is a national repository of educational data to track progress in achieving educational goals. So this is just to give you a gist of the kind of thing that we have gone into details in the policy on the questions of educational introduction. But equally important is the fact we have tried to create a kind of a setup. It is not creating a lab, or it's not creating a facility, but it's a kind of a forum, a national educational technology forum, which we have recommended to be set up with the following rules to provide. The reason why we thought about this kind of a body in the context of choices, in the context of selection, in the context of a research in educational technology, in the context of adaptation of educational technology from other sources of technology. The reason why I thought is the moment you throw open an technology as a facilitator for certain type of function, whether it is related to education or many other areas, it could be even to deal with energy from the waste. The type of technology and the type of options that will be available are enormous. And most of the time, the ability to make choices is one of the biggest problems that we see. The questions of when ISRO did work related to a national, what you may call as a developmental program, where you wanted to bring educational information to remote areas. The choice was to make sure that we create educational material. But what were the materials? Those materials had to be researched whether it is appropriate for the tribal population which is going to receive the material. 2 to 3 years of research work was needed before you could decide what the educational material and the technique of reaching the local population who will receive those material, and they will get enriched themselves in the process. This is a major challenge. This is one of the kind of example that if you want to proliferate the technology, you need to have a means of studying it, understand, evaluate, and regulate it. That is the idea that National Educational Technology Forum that we have tried to set up to provide an independent evidence-based advice to state and governments on adoption of technology-based interventions, to build intellectual and institutional capacities in educational technology, to envision strategic thrust in areas of technology domain, and to promote education in them among educational institutions, and to articulate new directions of research and innovation, the use of technology for improving education. We would assume that these kind of things, also the actual activities on research and things, will be carried out by the Department of Education, which will come up in the higher educational institution, at least some of the higher educational institution.
So the National Educational Technology Forum will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources, including the educational technology innovators and practitioners, particularly at the grassroots level. Disruptive technology, I don't know, this is something you're very much day to day, you're seized with. The 1986-1992 policy could not expect the internet's disruption. This policy fully expects the educational system to face many technological disruptions, artificial intelligence, machine learning, and so on. Two major aspects related to such disruptive technology we have identified: harnessing technology to improve educational outcome, that is human plus artificial intelligence, hybrid interactive systems, education in new and disruptive technologies, identifying them and preparing students in new large numbers. And finally, the project addresses both these kind of a thing, the policy. Now, on the governance side, I've just tried to, again, we got the policy in the beginning of my talk. I'm just coming back to the policy side and what is the kind of a governance structure that has been done. I am trying to here show the state education and the central education in two color codings. The blue is the color code for higher education and the yellow is the color code for this. And the main thing is the central agency for the education, the CABE, which is currently there, a council of the educational the thing. This particular CABE, the Central Advisory Board of Education, is now in this policy, they have elevated to the level that they will oversee the overall administration, governance, and evaluation of how the policy is going to work at the from the central level, and also to make fine-tuning or midterm corrections if needed, and virtually becomes a kind of a kind of a reviewer and evaluator, and also a recommender with respect to the changes needed in the context of the higher education. So this is the system which is adopting the Central Advisory Board and making it more empowered. Then we have an Higher Educational Commission of India, which is what is recommended to be set it up as the highest body on the higher educational commissions. As a part of the governance, you have the four major verticals that are there under the HECI. One is academic and standard setting, which can be the PS, the professional standard setting bodies, and so on. That GEC, General Education Council, the National Council of Technical Education, the All India Council of Technical, the medical. Ultimately, they will all come under the PS, the professional standard setting bodies, under the academic and standard setting. And on the academic side, you have, of course, the National Higher Energy Qualification Framework for higher education. And then you have the second one, which is regulation, the National Higher Educational Regulatory Body. And then you have accreditation, National Accreditation, this is the council. Then you have the funding, Higher Educational Grants Council. So these are the four verticals under a Higher Educational Commission of India. This is what is recommended. And of course, the education provision will continue to be given by the autonomous institutions and other types of institutions which are a part of the higher education or school education. So this is the kind of a structure, broad structure, that we have tried to evolve with respect to the governance of the educational system, and with this clear delineation of the higher education part of it. Important about this is the fact that empowered governance and autonomy of higher education. This is something which I don't think that this need to be much discussed when a place like IIT or IAC, but it's good to know that this is one of the things that had been of concern while they were debating on the subject with several of the experts in this area. That recognizes the effective governance and leadership is the key to creation of a culture of excellence in the innovation of higher educational institutions. All the higher educational institutions in the next 15 years will become autonomous, self-governing entities through a system of graded accreditation or graded autonomy. With appropriate graded accreditation, such institutions shall establish a board of governors consisting of highly qualified and competent individuals with proven capabilities and a strong sense of commitment, something which we need to do for many of the higher education institutions in this country.
The Board of Governors will be empowered to govern the institution free of any external interference, something everybody talks about it. This is something very explicitly made clear in the policy. Make all appointments, including that of the head of the institution, and take all decisions regarding the governance. The Board of Governors will be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of the relevant thing. The Board of Governors to develop a strategic institutional development. These are all there in many of the institutions, long-term, medium-term, 5 years, or short-term, 1 to 3 years, based on the institution can develop educational and research outcome, parameters for quality and capacity, improve organizational and financial and human resource development plan to assess the progress. So this is just to give you a flavor of what we have recommended in the empowered governance and autonomy of the higher education. The most important aspect is the fact that we have strongly recommended the autonomy on the governance, on the academics, as also on the finances. Now, what is the kind of way forward before I conclude the thing? There are several things I did mention in the beginning of my talk that there has been one of the most important steps that was taken immediately after the government took decision on accepting this recommendation with necessary inputs from public domain and other sources is the fact that once they knew that there were a number of presentations, there were a number of discussions, there were a number of seminars and other kinds of interactive systems. And both Honorable Prime Minister and Honorable President were involved in many of these. I don't have to say that here. Many of you were there as a part of that particular thing. So there is quite a lot that has happened in terms of sensitizing the policy in its role, but certainly there are many things which continue to be inquired about, seek clarification about, and not every some of them will come forward only when you try to do these things. You start getting a feel of the issues, and that is where I said about the midterm correction or fine tuning or better clarification or change of strategy. This will be a part and parcel of this, but by and large, I find that this is understood by many of the policymakers and implementation the related responsible people. The MOE itself has done an action plan. Now they have done it. I understand. They have, because I'm telling this this part of it more from the input that I received rather than trying to be a part of it. But I want to say that the MOE has certainly provided a good action plan, which they have worked it out, which has got something like 100 and they have taken the higher education policy section. They have looked at the various policies items. They have converted them into identified action plans, and 181 activities have been identified with the frame that it needs to do this under 16 broad themes. This is what they have tried to do. We need to do this. There's a continuous churning of these ideas, and some discussions are going on this. The UGC on its own has been also organizing conclaves for discussions on this particular thing. And then there have been a lot of the outreach of the policy to different segments of the governance systems of the country, both the central and the state, has been another major feature of the recent efforts in trying to make sure that the policy is read, understood, and then come out with suitable strategies of implementation which are applicable, because there are the local issues also. One has to keep it in mind. There is a broad strategy that we need to have for the country, for the policy to be translated into the next step of implementation, and also specifics with respect to the local conditions or the regional conditions and things of that kind, which is more than just the policy. It has got finances, it has got the resources, human resource, and many other things. So this is something on which work will be done. But the fact I would like to emphasize is, and you know this again because you are a part of a system which is implementing it, that this work is in the forward, in the movement. And I cannot but conclude with the statement that, as I said in the beginning, I think this is a very unique policy. It has its own challenges to implement. But I think what is important and what is reassuring for some of us is the fact that
many elements of this has been done in some form or other by institutions. And I mentioned about the IIT Delhi because of its pioneering role in areas like multidisciplinarity and approach of science, technology, and policy, society, or more recently, with respect to humanity and social sciences to be integrated into the undergraduate education. So these are things on which it is not that these are all totally new because of the policy, but there is much more that has been done through the various actions and directions and visions of various leaders and institutions of this country. I'm sure that we need to understand it very clearly. We need to see how that can be adopted and how this policy itself can aid in taking it forward. So with these few words, I would like to thank again the Institute, the director, deputy director, and others for this privilege of talking to you and sharing my thoughts with you. Thank you very much. My name is K. Ramachandran. Currently, I work as Senior Advisor, Unit for International Cooperation, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. The topic I have today is importance of policy in education and the fundamental principles guiding the National Education Policy 2020. Let me take the first part. What is the importance of a policy in the field of education? A policy normally gives a direction for education development in the country, say, for the next 10 years, next 20 years, and so on. Policy sets a vision. For instance, the National Policy on Education 2020 envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India a knowledge superpower. That is the overall vision. So a policy provides a vision based on which we can formulate programmatic interventions to fulfill the vision, at the same time also to meet the education sector development programs in the country. The National Education Policy 2020 has certain fundamental principles guiding it. Number one, for instance, the policy seeks to recognize, identify, and foster the unique capabilities of each student so that we can nurture and foster her or his holistic development. The term holistic development is very important. I'll come back to that later. The second term, which is very important for all of us, is the term flexibility. The NEP 2020 envisages
flexibility in paths of learning, in choice of programs and courses, so that the education can be tuned to the interest and talent of each student. So this is the second principle guiding the policy. The third principle is what we call honoring student diversity. India is a country of tremendous diversity in terms of socio-economic status, in terms of culture, in terms of language, and so on. And therefore, the kind of students we get also would be of tremendous diversity. Many of them could be at the undergraduate, postgraduate level, first generation learners. How do we honor this diversity? Let me get back to the term holistic development. What do we mean by this term, holistic education? It simply means an education program that would help develop all capacities of human beings. For example, intellectual development or intellectual capacities, physical capacities, social development, emotional development, aesthetic development, ethical practices, and moral development, all in an integrative form. To have this integrated approach, therefore, will require exposure of students to or building capacities across variety of disciplines like arts, humanities, social sciences, natural sciences, vocational education, performing and visual arts, and so on. That would be what we call a multidisciplinary education approach. So to promote holistic development in the higher education sector, two quick actions. Number one, moving higher education institutions into large multidisciplinary institutions. And the word large is also important. In India, we have a large number of standalone institutions with the enrollment in many cases less than 1,000 and even less than 500. How do we move these single stream higher education institutions to a multidisciplinary institution? That becomes a transformative initiative, number one, for us. Second, can we offer in our universities and colleges multidisciplinary programs? That means a person may major in physics, maybe the person may offer a minor or opt for a minor in music or a visual art or history or economics. That means there is no clear-cut demarcation between arts, sciences, vocational field, and so on. That means the boundary between different areas of knowledge can be removed and get an integrated holistic education. Students are given options to choose courses or programs of study according to their interests and talents. And that is possible only we offer what we call multidisciplinary education. Gradually, all undergraduate programs in the country will move towards a multidisciplinary education approach, including those related to professional education,
vocational education, and so on. So therefore, many of these professional, technical, and vocational education programs also will have this approach, what we call a multidisciplinary approach to education. So this is a transformative initiative we envisage through the implementation of the National Education Policy 2020. Third, the National Education Policy 2020 envisages what we call institutional restructuring and consolidation. What do we mean by this? All higher education institutions in the country would be categorized into three groups. Number one, those which are referred to research-intensive university. They will offer high-quality research programs in addition to high-quality teaching. That means the focus will be on both high-quality research and teaching. This will be one set of higher education institutions. Second, teaching-intensive universities. They will focus more on high-quality teaching, but at the same time, they will also do significant research. This is a second category. The third category belongs to what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which can award undergraduate degrees, but they will also, if they accept 4-year undergraduate program, will also have research projects done by the students. These are the three categories of institutions we propose to have during the next 10 years. Research-intensive universities, teaching-intensive universities, autonomous colleges, or constituent colleges, which will award undergraduate degrees. Gradually through this, the affiliating system followed by the current universities will go away. It means many of them would become, the colleges affiliated now, would become what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which would be an integral part of the university. So this is what we call institutional restructuring and consolidation. The fourth aspect, if you really want to improve the quality of education, make it multidisciplinary approach to education, we will need to attempt revamping of curriculum, including pedagogy and assessment program. Therefore, we will need to undertake curricular revision. Learning content should be revised. Pedagogical approaches should be made in tune with the revised curricular structure, and assessment that would help in moving towards, in terms of the multidisciplinary approach. This is what we call moving towards academic excellence. Now, academic excellence, as I indicated earlier, includes three things. Number one, enhancing the relevance of learning contents. This is one aspect. The syllabi has to be revised, and the contents related to these must be improved. Second element of academic excellence is what is referred to as teaching excellence. How can we ensure
that the teaching and learning process is improved to make it excellent in terms of imparting relevant knowledge, skills, attitudes, and values among all our students. Third element of academic excellence is, as I indicated earlier, improving the assessment methodologies and procedures. The policy talks about 3 approaches to assessment. Number 1, assessment of learning. That means assessment of learning outcomes, expected learning outcomes. Sometimes we call summative assessment. This is one aspect that helps students to move towards certification and so on, improve learning process, and see how we can move forward. The second element is what we call assessment for learning. Teachers assess learning to improve their own teaching methodologies, instructional strategies, pace, styles, and so on. This is essentially what is referred to as formative assessment. In fact, the emphasis now will be more and more on formative assessment. The next element is what we call assessment as learning. After assessment, students have what we call self-assessment strategy. Can they make self-corrections? Can they do self-monitoring of expected learning outcomes and make corrections required to enhance learning? That means the students themselves will use assessment to improve learning processes. That is assessment as learning. All these are part of what we call academic excellence. The next element of policy is faculty as the main part of learning process. Faculty at the heart of learning process. It means faculty excellence is something we aim at. This would need high quality induction programs for university and college faculty, high quality refresher program for the existing 1.5 million faculty in universities and colleges, for their continuous professional learning and development. And through that we can bring about faculty excellence for 3 core functions. Number 1, what we call teaching excellence, scholarship, and so on. Including next one, excellence in research, teaching, and scholarship. So one important aspect of policy, therefore, is can we enhance the quality of research being done by Indian universities through the creation of the National Research Foundation, which will fund peer-reviewed research proposals and programs proposed to be undertaken by universities, mainly universities and faculty of universities and students. So therefore, the next transformative universities, initiative relates to enhancing quality of research or catalyzing quality research and innovations.
This is again a transformative initiative. The next transformative initiative we are talking about is, again, in the context of academic excellence, is utilizing technology. That means leveraging technological and digital technologies in education for 3-4 purposes. Number one, enhancing access to quality education. Number one is this. Second, improving the quality of teaching and learning process in universities and colleges and other higher education institutions. Third, can we leverage technology for continuous professional learning and development of our faculty in universities and colleges? Fourth, can we use technology to improve educational planning and administration at all levels of education, including higher education management system? Next transformative initiative in this context is changing the regulatory system of higher education. We now have a single body regulating the higher education system. Can we ensure that the higher education system have a body for regulatory functions, a separate body, maybe named as Higher Education Regulatory Authority? Second, a body for standard setting in higher education, a separate body for standard setting, referred to as General Education Council. The third body, as we have now, for assessment and accreditation of higher education institutions. What is being done by NAC? Can NAC be a meta-accreditation body, which may have many more bodies to accredit, and NAC plays the role of a meta-accreditation coordination body? Last, a body for financing higher education. All together, all these four, that is regulatory body, standard setting body, accreditation body, financing body, under an umbrella organization called the Higher Education Commission of India. This is considered to be another transformative initiative. What the policy proposed is, while regulating higher education, we want a system that is simple but tight, that not too many indicators, take a few indicators to accredit a body, regulate a body, but enforce it tightly. So that's the kind of thing we are talking, that this system will help develop quality education institutions. And in this context, technology is an important aspect as well. The next element in the context is policy is based on what you call equity and inclusion in all higher education institutions and so on. So equity and inclusion, I consider inclusion as providing access to success, not just access to facilities, and ensuring retention. Can we ensure that all enrolled students in the country will have access to success? They would attain
the expected learning outcomes in the case of all students. So equity and inclusion as cornerstone of the National Education Policy 2020. Next in the case is, can we ensure what we call the support system for all colleges and universities, a quality learning environment to ensure a conducive learning environment for a support system for students, how we can do it. So an important emphasis of the policy is on what is referred to this as improving the quality of learning environment and support systems, including the healthcare systems for students and faculty. Can we attempt that? Last but not least, I talked about this. When we say continuous professional development of faculty, I normally mention 5-6 areas of action. Number one, that training is important, as we do through this program. But in addition to that, can we have faculty exposed to good lectures by experts in the field on variety of disciplinary areas and so on. Number two, can we have demonstration lessons, demonstration teaching for all faculty members, subject related, subject specific, and so on. Third, we may have virtual or in-person subject specific groups which can meet virtually or in person once a month to discuss issues related to subject areas and so on. Next, can we provide opportunities to faculty to have action research on pedagogy, curricular contents, learning assessment, and so on? Can we aim at that? Next, can we ensure opportunities for faculty to participate in state level, university level, national level seminars, conferences, and so on? That also contributes to faculty learning and development. And lastly, even international exposure to faculty, participating short-term programs abroad, customized to program on research and development, and can we do it? And that is one element. Since I have limited time, I'm not trying to say that the policy, when implemented totally, will help enhance student excellence, students capable of demonstrating the graduate attributes expected, the learning outcomes defined for all stages of education. Number one, this. Contribute to achieving academic excellence through improvement of learning contents, teaching, assessment practices. 3, achieving teaching excellence through the kind of programs we talked about. 4, achieving excellence in research and scholarship. 5, achieving staff excellence, non-academic staff in university. Can we achieve that? Next, can we give opportunities to international experience for our students and faculty? Faculty exchange program, student exchange program, and so on. Next,
very important, as policy indicates, achieving excellence or quality in university leadership, college leadership and management. You may ask me a question, what is the difference between leadership and management? A leader is one who sets a vision for your college or university, sets directions for actions during the next 10 years and so on, 15 years, 20 years. And through this, can we aim at reaching a gross enrollment ratio in higher education for the age group 18 to 23 years, 50% by 2030? That is a target. Can we reach that? So excellence in governance and leadership is extremely important thing. Management. A manager controls resources, deploys team to ensure that the proposed vision of a university is enhanced, achieved, and that becomes the role of a manager. To end my discussion, I would say, what is proposed is to implement these transformative initiatives during the next 10 years to ensure high quality higher education, to make India a global knowledge superpower during the next few years, to reach the overall vision of the National Education Policy 2020. And in this, faculty of colleges and universities have a pivotal role. And that is why policy says teachers and faculty at the heart of the learning process. So I end by saying, next few years, we invest more in faculty, more in continuous professional learning and development of faculty in each of our higher education institutions to move towards a multidisciplinary higher education institution, to implement a multidisciplinary program, to improve leadership at all levels, to enhance governance management, and these are all part and parcel of the NEP 2020. I stop at this stage. Thank you very much for your kind attention.